good evening. A very happy new year to everyone. We'll be starting shortly. Ishmohit will be joining in a couple of minutes. So, in the meantime, let me reiterate the session will be purely educational, and if during the conversation any names taken should purely be for example purposes or illustrations. So, please do not act on them. Take the sessions learning as a starting point so as to do your own due diligence, and the guest and the host won't be responsible if you act on any of such names. The session is being conducted for educational purposes. Yeah, we have Ishmohit. Yeah. Hey, hi, good evening, Ishmohit. Hi, Vince. How are you? Hello. Hello. Yeah, am I audible? Yeah, you're audible. Am I audible? Oh, yeah, loud and clear. Okay, wishing So everyone a very good happy new evening year. and happy new year. Right. Thank you. So, Ishmohit will wait for a couple of minutes so that more people join in and can benefit from the session. Sure. A happy new year to each and everyone who's attending. अब 1st January को attend कर रहे हो. I think after like you must have had a great day, every one of you yesterday. And आज वैसे छुट्टी का ही माहौल है हर जगह. But thank you so much for attending and taking the time out. Just gives us an idea at how passionate the investing community in India has become. Ishmohit, I guess some voice is breaking. So, in between, can you please check your connection again? Just a second. Am I audible right now? Prince, am I audible? Yeah, much better, loud and clear. Great. In the meantime, we can start with the disclaimer thing, right? So I'll just give the disclaimer that nothing in this Twitter space is a recommendation for you to buy or sell. Do consult your investment advisor or a research analyst. And like we are not liable for any losses or gains that you make, and we are not a SEBI registered organization. Our effort is just to teach you about how to think about businesses, stocks, and stuff. So that is what our efforts are limited to at the moment. Great. So, guys, let me take a moment. Although everybody knows Ishmohit and SOICs, but again, as a tradition, I have with us Ishmohit Arora, co-founder at SOIC, a School of Intrinsic Compounding. It has been in place since January 2020 and last maybe almost 3 years, right? So those have been really great, and Ishmohit has brought revolution in teaching the fundamentals and about equity investing. So he is passionate, which is very conspicuous with his work. And I, being a tribe member, I can vouch for it. The content Ishmohit is providing is much more than they are asking for. So a very warm welcome, Ishmohit. And today being the first day of New Year, nothing can better and get better than this. So a very warm welcome, and I would request you so as to set a backdrop. That what our attendees can expect from today's session. Yeah, over to you, Ishmoy. Thank you so much for the warm welcome, Prince. So, in today's session, we'll be just touching upon that, what is like having the idea of different factors in a portfolio, and we'll also talk about how the idea of creating non-linear portfolios, and finally, we'll have a discussion on proxy investing. And I think there are some 40-50 questions which Prince also has, like a lot of like participants have asked. Then towards the end, we'll also take some of the questions as well. Great. So, Ishmoit, like my first question would be if I ask you about your investing journey in two phases, say pre SOIC and post SOIC. So would like to know how it things have changed, and like when you have started SOIC, how it has evolved over a period of time. I think one thing that everyone will agree is that, right. So there's a saying as well that if a person like crosses a river for the first time, and if they cross the river the second time, it is not the same person and not the same river as well.
So markets are also like that, that you keep learning throughout the journey, you keep experiencing cycles. And one thing that is very, very important to understand is that a lot of things that we look at are cyclical in nature, because stock markets themselves are cyclical in nature. And these cycles are caused by the peaks and troughs of the economy itself, the underlying GDP. And these cycles of tailwinds and headwinds, the more you stay in the market, the more you start appreciating them. That a lot of the things that happen, like a lot of money as well that you make in different cycles, is also just because of luck, that you were already pre-positioned over there. So I'll just give you an example. Like, so I was just reading this book. I'll just that Money Masters book by John Train. I was just reading the Peter Lynch chapter. So Peter Lynch, what he like essentially used to do was that between a span of almost 12 years, when he was managing that like fund for Fidelity, in that fund he almost for 12 years he bought and sold 14,000 stocks, which was something which I was like blown away after reading. And his returns were like some more than 25% CAGR. I think he had a 27% CAGR. And in the book, he simply wrote that I actually like, so according to his style, so this is something that also very like resonates with me, is that the idea of circle of competence is damn overrated. That what he used to do was that suppose at a given point of time his mutual fund used to have 1400 stocks, in total he bought and sold 14,000. So at a given point of time his fund had 1400 stocks, out of which the first 100 stocks were like 50% of the AUM, and the remaining 50% was distributed amongst the others. He was so well versed with different industries that if you just have a brief idea that what a particular industry is doing, and if you are experienced enough over a period of time, I'm not saying कि आपके रातों रात ये चीज़ कभी डेवलप होएगी. It will take almost 5 to 10 years of hard work for you to get an idea कि अगर एक IT सर्विसेज में ER&D कंपनी है तो उसका मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज और डी लेवरेज है. What is the difference between a pure IT services company and a ER&D business? So he wrote a very beautiful thing that basically you didn't need to know too much of technology to simply bet on MS DOS, because उस time पे Microsoft had basically was the owner of MS DOS, and MS DOS was being used in every personal computer. You just don't want to bet on countries. You just like in the war, you just want to bet on people who are selling them bullets. And इसमें आपको कोई tech analyst बनने की भी जरूरत नहीं थी, right? And over a period of time, he developed that framework that he knew something that is happening in that industry, and he could time the cycles better. This is why we see the returns that he had, that he could time the cycles better. That अगर IT stocks में क्या चल रहा है जब demand horizon better हो रहा है, because he was connected to the thing, and temperature checks he was again and again taking by talking to managements, and by like I think he started work at some 6 7 a.m. in the morning. So he always had these ideas in his mind. But for a normal retail investor, the idea is, even if you can have like 10 to 15 such sectors in your mind, and believe me, it's not that difficult. If you have 10 to 15 such sectors in your mind, इंडिया में है ही इतने मतलब जो मेजर सेक्टर एक्शनेबल है, you can clearly develop these patterns, right? I think that is one thing that has really, actually I was just reflecting back on it last night only, that अगर कोई learning आई है पिछले 7 साल में तो कौन सी learning है. So this is one of the learnings which I have had. जैसे I'll give you an example, like between I think when I started way back in 15 and 16 में जब बहुत serious हो गया था, तो 15 के आसपास a lot of companies like which were like सारे ही मिड और स्मॉल कैप अच्छे कर रहे थे, बिकॉज पूरा साइकिल ही उस टाइम पे फेवर में था. टेक्सटाइल कंपनीज वर डूइंग रियली वेल, फार्मास्यूटिकल कंपनीज वर डूइंग रियली वेल जो यूएसएफडीए वाली एक्सपोज हुई थी, एंड सच टाइप ऑफ कंपनीज वर डूइंग वेल. देन फार्मास्यूटिकल्स पे यूएसएफडीए के ब्लैक स्वान आने चालू हो गए, तो पूरा सेक्टर ही चला गया. फिर टेक्सटाइल में भी लाइक अमेजोन और इन सबके जो प्राइवेट लेबल से बहुत अग्रेसिव हो गए यूएस में बिटवीन 15 to 18. एंड टेक्सटाइल के भी उस टाइम पे जो काफ़ी सारे बिजनेसेस थे विच वर सेलिंग बेड शीट्स एंड स्टफ टू वॉलमार्ट एंड टारगेट, they also suffered at the end of the day in the Indian context. मतलब they couldn't export those volumes. So that sector went down the drain. Then between 16 to 18, I don't think कि कोई यहाँ पे जो 16 18 में इन्वेस्ट करता होएगा उसने एनबीएफसीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का नाम नहीं सुनाएगा. मतलब स्टोरीज होती है कि हाउसिंग फाइनेंस तो 1 लाख करोड़ की कहानी है, right? I think a lot of people will remember this. And then ILNFS happened. ILNFS के साथ साथ we also had the Yes Bank fiasco,
then a couple of small banks also like went bust. And उस time पे I think RBL Bank IPO'd at a very high valuation at that time, because for a wholesale bank it came at some 3-4x price to book. So that was also a time that initially, if you didn't have the financials, if you didn't time the cycle well, then all of like your portfolio would have not done so well, right? That is just an example. Then between 18 to 20, we had a cycle when the economic growth really slowed down, and we had like the likes of like some of the value like 40-50 PE businesses going to 100 and 120 PE, because economy slowed down, there was no growth anywhere, so टीना option हो गया था, there is no alternative. आपको इन्हीं में पैसा डालना पड़ेगा अगर थोड़ा भी रिटर्न बनाने दो, right? So like all these companies that you've heard about, Abbott, Asian Paints, all these companies became very very famous between that 18 to 20 period. Then between 20 to 21 and a half, right? So what we got ki a lot of like pharma companies did well, chemical companies did well, IT businesses did well, right? E-commerce wale jo players they did well, right? So that was again factors moving together. You have to remember this, factors they move together in markets. So I think like reading all the works, so if you've read the book of Stan Winstein, Secrets for Profiting in Bull and Bear Markets, he'll also keep mentioning that factors they move together. Then after 21 and a half, right? So like if मतलब बीच में अगर 2021 के अगर आप आधे साल के आप बात देखेंगे, so all these sectors which were favorite in the last 1.5 years have gone through a downturn now. And now like new companies like your railway sector has been doing well, then your fertilizer sector out of the blue it came, right? Then it started doing well. And your defense sector it started doing well, the ignored spaces, capital goods started doing well. सो द आइडिया इज कि लास्ट 7-8 ईयर्स में एक तो रियलाइजेशन आ चुकी है जर्नी की कि मार्केट्स विल मूव इन फैक्टर्स, एंड मोर देन 95% ऑफ द बिजनेसेस और द सेक्टर्स आर सिक्लिकल इन नेचर. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, दैट बी हम्बल इनफ. पहली चीज तो आप हम्बल रहो कि ये चीज तो सच है कि सिक्लिकलिटी और ये जो अप्स एंड डाउन्स हैं, दिस इज द फैब्रिक ऑफ द मार्केट. इट्स नॉट दैट इट्स नॉट देयर, इट्स द फैब्रिक ऑफ द मार्केट. And you have to be prepared to know that what works in each sector, what doesn't work in each sector. जिसने 2015 की यूएस एफडीए वाली और प्राइसिंग इरोजन वाली 15 to 20 में फार्मा की वो जो साइकिल देखी थी, ही वुड हैव बीन प्रिपेयर्ड इन 21 एंड हाफ की मे बी दिस इज द टाइम टू गो अवे फ्रॉम द सेक्टर. आईटी वाला कभी जिसने साइकिल देखा, ही वुड हैव आल्सो बीन प्रिपेयर्ड कि अच्छा लाइक द वैल्यूएशंस आर आल्सो cyclical. So this is something that one has to realize, that 95% of the markets are cyclical in nature, and this has been one of the biggest learnings in the last 7 to 8 years, friends. Great, Ishmohit. So, Ishmohit, if I were to ask, like, as far as investing is concerned, so what remains constant, and what are the pointers which you think keep on changing? Just you talked about cyclicality and all, we got it. But again, any other pointers you think for which we have to keep ourselves updated? I think, see, a lot of businesses, see, there will be businesses which don't display cyclicality as well. So that is like you're getting into structural investing. But the idea is that some of the themes that work over and over again is that one of the themes which I really like is that of proxy investing, right? You're looking at a trend now, just as an example, again, a business name, nothing to do with for you to buy or sell, just look at this name like. तो अब कई बिजनेसेस में ना वॉलिटिलिटी इनबिल्ट होती है, कहीं में नहीं होती. तो अभी जैसे रिसेंटली वो मोतीलाल ओसवाल का एक नया जो वेल्थ क्रिएशन रिपोर्ट आया था, दैट इज समथिंग दैट ऑल ऑफ यू मस्ट रीड, इज दैट कंसिस्टेंट वर्सेस वॉलेटाइल्स. That consistent businesses they do well, but volatile businesses which become consistent, or consistent businesses in volatile sectors, they end up even outperforming the consistent businesses, because वहाँ पे एक element of surprise भी रहता है. So these are some of the themes which are like which will always be there. Like just to give you an example, अब cyclicality भी, there are different grades of cyclicality. एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, चलो यहाँ पे दो बिजनेस का एग्जांपल है, तो पहले प्रॉक्सी में आगे बात करते हैं. अब RHI Magnesita used to be known as Orient Refractories in 17 or 18, right? It used to be known by that name. Then इस कंपनी का merger announce हुआ, and like it took them 2 years, 2.5 years to get the merger done, because NCLT से अप्रूवल ही नहीं आता था इनको. एक वो तारीख पे तारीख वाली बात बिल्कुल नहीं, एकदम सही है. And then 2021 के आसपास अप्रूवल आया, Orient Refractories turned into RHI Magnesita, and they came and announced that we'll double our production capacities, right? अब स्टील बिजनेस इतना ज़्यादा वॉलेटाइल बिजनेस है कि अब टाटा स्टील के लिए यू हैव टू ट्रैक द प्राइसेस ऑफ स्टील प्राइसेस, डोमेस्टिक में HRC प्राइसेस क्या चल रहे हैं, फिर उनके की इनपुट के प्राइसेस ट्रैक करने हैं. अब यहाँ पे क्या था, बिकॉज एवरी 1 or 2 weeks और एवरी 1 or 2 months
like your refractory has to be changed. It was that easy to sort of diligence. But यहाँ पे missing चीज़ क्या थी कि एक exports का angle नहीं था. Then they came and announced कि 25% of our business will be in exports over a period of time. Right, so these are some of the themes that you'll keep catching in a lot of sectors. I think a proxy wala theme, if had someone caught Raj Ratan Global Wires, that was a proxy theme, right? Had someone caught the amines businesses in 2020 or 18 or 19 maybe, so that was a proxy theme. If someone is looking at some of the auto ancillaries today, jo aesthetics business man, that is a proxy theme. So proxy theme is something that remains to be like golden over a period of time. Ab last 10 to 15 years maybe, agar if you look at some of the huge winners as well, apart from financials, a lot of them have been proxies, right? Agar Avanti Feeds did well because India ka shrimp ka export बढ़ रहा था, so they were selling feed to the shrimp farmers. So again, a proxy to the shrimp exports of India. So this proxy theme is something that over a period of time in last 10-15 years, if you look at it, this is a theme that remains. Names keep changing because of cyclicality. बट ये जो थीम है ना, अगर ये थीम किसी ने कोई ऐसा स्टॉक ठीक टाइम पे पकड़ लिया इस थीम में, I think there is a probability that you, even if two or three of such businesses you get, you end up making like non-linear returns. Like cable and wire में देख लो, आज 20 साल से I think like cable and wires have been a proxy. मतलब it's not a rocket science business. राइट, क्या सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस चाहिए केबल एंड वायर को समझने के लिए? रॉ मटेरियल क्या है आपका? कॉपर रॉ मटेरियल है. एंड यूजेस क्या है? प्रोजेक्ट में यूज होता है, रेलवे में यूज होता है, रियल एस्टेट में यूज होता है, यहाँ तक आपके जो जितनी भी आज की ग्रीन एनर्जी यूज हो रही है उसके अंदर यूज हो रहा है, अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए यूज हो रहा है. तो इसमें क्या आपको सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस चाहिए? इसमें डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है. तो ये सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस वाला ये जो पूरा डराया गया ना आपको, इसको दिमाग से निकाल दो. पहली चीज, एक रिटेल इन्वेस्टर को हमेशा दो ही चीजें याद रखनी है कि थीम क्या है और अर्निंग्स ग्रोथ कहाँ पे है. बस इन दो चीजों में आपको दिमाग लगाना है. इफ यू स्पेंड इवन सम टाइम, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द की वेरिएबल्स ऑफ अ बिजनेस. We are not promoters of a business, we are investors in a business. And as investors we are flexible enough. Promoters cannot quit the business, but as investors we can quit the business and move to something else where we find even better tailwinds. That is as simple as that, and these things will remain true. Right, these things will remain true over a period of time. Long term buy and hold up hota hai when the business keeps performing over a period of time. Right, you will find like good businesses which have like structurality attached to them. जैसे हमने केबल्स एंड वायर्स का एग्जांपल लिया, लाइक वो बेवरेजेस वाला बिजनेस आई थिंक 2017 से ही 20-25% की ग्रोथ आ रही है. लाइक अनदर एग्जांपल इज लाइक सपोज एग्जांपल ऑफ दिस कंपनी बाय द नेम श्रीराम फाइबर्स, SRF. Right now the chemical business in it has grown at 80% CAGR for the last 3-4 years. उससे पहले 1-2 साल का कंसोलिडेशन पीरियड था. तो इसमें भी एक डिफरेंट टाइप की सिक्लिकलिटी है. मे बी मार्जिन्स डोंट गो थ्रू अ लॉट ऑफ अपस्विंग्स एंड डाउनस्विंग्स. मे बी बिकॉज ऑफ डिमांड एनवायरमेंट इट गोज थ्रू सम सिक्लिकलिटी. Now if you understand this and if you understand the competitive positioning, that is why I think मतलब SOIC पर्पज, चैनल का पर्पज ही क्या है कि आपके रपीब में 282 वीडियोस बना सको. जिस दिन 500 वीडियोस का मार्क टच हो गया ना, दैट विल बिकम अ विकीपीडिया फॉर यू. कि अब यू कैन गो बैक एंड बैक अगेन एंड चेक कि अच्छा इस बिजनेस में क्या चलता है, उस बिजनेस में क्या चलता है, अच्छा अभी क्या हो रहा है. एंड देन यू कैन एटलीस्ट, even if you're using technicals, if you're doing fundamentals, at least you can have a basic idea ki what are the key variables of this sector of this or this business at the moment. Right, right. So there is one question from an attendee also. So what all paid screeners you use, and since we are talking about screeners, so what are your ways of generating ideas? Is it only purely basis of screeners only, or just like you also get ideas from social media also? See, I have like a plethora of tools to generate ideas. So first thing is, first I think first just consider yourself, consider your brain to be a sponge. Sponge की एक quality क्या है कि it absorbs water and it absorbs different liquids. So world around you is actually just made up of bits of or fragments of information. When you interact with that information, you become informed, and then actually you are information. The word which says information, right? So that is the idea at the end of the day, that whenever you're looking at like businesses, you have need to first thing have an open mind. Second thing, tools for filtration. Like there are multiple tools. I'll just discuss multiple tools हैं जो आप use कर सकते हो. एक जो आप टूल यूज कर सकते हो, अगर आप स्क्रीनर यूज कर रहे हो तो स्क्रीनर पे जस्ट यूज दिस टूल ऑफ वेरिएंट परसेप्शन. राइट, तो वेरिएंट परसेप्शन में क्या है, जस्ट लुक फॉर कंपनीज जहां मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, ओपीएम इंप्रूवमेंट है. आई थिंक आफ्टर दिस सेशन आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन्स दैट आई यूज. मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, कंपनीज विच आर डूइंग कैपेक्स, राइट, कि कहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है,
थर्ड थिंग, बेसिकली लुक फॉर कंपनीज विच आर डूइंग डेट रिडक्शन, कि कहाँ पे डेट रिडक्शन हो रही है. डेट रिडक्शन कहाँ होती है, जहाँ पे कुछ ना कुछ बिजनेस में स्ट्रांग हो रहा है एंड कंपनीज पेइंग ऑफ ऑल द इंटरेस्ट, राइट. तो ये डेट रिडक्शन के चक्कर में आई एक्चुअली गॉट अ स्टील वायर बिजनेस लाइक अर्लियर दिस ईयर, कि वो डेट रिडक्शन वाले स्क्रीनर में आ गया था. देन बिजनेस पढ़ा तो पता लगा नीश है, मार्केट लीडर है, प्रॉक्सी है, एंड सिंपल प्रोसेस, यू जस्ट गो एंड बेसिकली like allocate, and I think it has done really well. But it was simply a part of debt reduction screener जो उसमें आया. capex margins debt reduction, I think three ये जो main screens है, these you can use. Then another screen that you can use, you can go to simply stock edge, right. stock edge पे जाके you can use this idea of relative strength. You can use this idea of relative strength. तो प्राइस स्कैन्स के अंदर रिलेटिव स्ट्रेंथ इन लास्ट 55 डेज आपके सामने आएगा. जस्ट यूज इट, जस्ट गेट एन आइडिया व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द मार्केट, कि मार्केट का ब्रेथ क्या है इस टाइम पे, राइट. अगर जैसे उसमें पिछले 4 मंथ से रेलवे बिजनेसेस आ रहे हैं, राइट. सो maybe one can read that maybe something or the divergence is happening, right, कि उसका relative strength is increasing compared to the benchmark, and one can just simply read those businesses, because value remains value without a catalyst in play, and that catalyst at the end of the day is liquidity. And what is liquidity? People agreeing with you that this business has value, right, and this business might grow. So that is when the valuation gets converged and you make like good returns in a very short period of time. So that is like a relative strength screener is like an invaluable tool that I think all of the investors should definitely actually use. तो relative strength वाला आपको एक जरूर यूज करना चाहिए. तो जैसे relative strength में पिछले 5-6 महीने में क्या क्या आ रहा है आपके 4 मंथ से, इवन दो बैंक्स, मतलब हम लोग तो 2021-20 से या 21 के स्टार्टिंग से कह रहे हैं कि बैंक्स में मतलब देखना चाहिए किसी को, बट जब लिक्विडिटी एंटर करती है तभी एक्चुअली में रिटर्न्स बनने स्टार्ट होते हैं. तो ऐसे ही वहां पे किसी और पब्लिक सेक्टर बैंक में कुछ हुआ, बट प्राइवेट सेक्टर बैंक भी एक दो की पी पे पड़ा हुआ था, राइट. एंड वहां पे भी पूरा आपका जीएनपीए वीएनपीए क्लीन अप हो गया, 0.3 टाइम्स बुक पे था, राइट. इवन तो मैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में नहीं इन्वेस्ट करता, बट दैट इंडिकेशन ऑफ लिक्विडिटी एंटरिंग द प्ले gave me was enough motivation for me to study that private sector bank, because it was at 2p, and when it happens like in 2 months you make some 80-90% returns. That is the end of the day, because fundamentally it is screened, npas are falling, cost to income ratio is going to fall, your operating leverage is kicking in, and some of the asset quality cleanup has been done. But over here objective clear है कि turn around है, deeply cyclical है, अपने वैल्यूएशन पे आएगा तो बेच के साइड पे निकल जाऊंगा. ये बाय एंड होल्ड वाला यहाँ पे पर्सपेक्टिव लगाना ही नहीं है, क्योंकि बिजनेस ही इस टाइप का खरीदा है. सो दिस इज वन टूल दैट यू कैन यूज. थर्ड टूल दैट यू कैन यूज इज दैट इनसाइडर बाइंग स्क्रीन बाय ट्रेंड लाइन के ऊपर इनसाइडर बाइंग स्क्रीन है. मेरे को ना कुछ बिजनेसेस बड़े पसंद आते हैं जहाँ पे प्रमोटर बड़े लंबे समय से खरीदते रहते हैं. तो आई विल जस्ट गिव यू एन आइडिया दैट जैसे अभी केमिकल्स में दो बिजनेसेस हैं एग्जाम्पल में, एक तो एस्टेक लाइफ साइंसेज है और एक आपका एप्कोटेक्स है. Aztec में गोदरेज ग्रुप खरीदते ही जा रहा है, एंड द promoter which was going like Mr. Hiremat, now he also started buying the stock all of a sudden. So again a standard disclaimer, I don't own the stock, but at least मेरे लिए filter हो जाएगा कि why are they putting in so much money, 16 crores का ले रहे हैं, कभी 10 crores का ले रहे हैं, तो ऐसा क्या चल रहा है बिजनेस में. Then Apcotex, right, every month every day the guy is buying, every day is doing a SIP in his own stock, right. So अगेन इनसाइडर ट्रेडिंग वाली स्क्रीन में मेरे एटलीस्ट फिल्टर हो गया मेरे सामने. अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, आई डोंट ओन इट, बट मेरे फिल्टर्ड है स्टॉक, बिकॉज अगेन इट्स अ जो हम चीजें देखते हैं, मार्केट लीडर है, नीश है, प्रमोटर पेडिग्री अच्छी है, आरओसी है, आरओई है, कैश फ्लो है, डिविडेंड पेमेंट है, सारी चीजें तो मीट हो ही रही है. तो मे बी स्टडी द बिजनेस मोर. तो अगेन इंफॉर्मेशन इज देयर लाइक इन द एयर, you just interact with it and then you become informed about it. So that is also like a wonderful way to sort of screen about stocks, screen about companies. एंड आई थिंक ये तो हम करते ही हैं प्रिंस. एक चीज़ और भी जो हम करते हैं एसओआईसी में, कि हमने मार्केट लीडर्स की ना एक लिस्ट बना रखी है, प्रॉक्सी प्लेस ऑफ मार्केट लीडर्स की, कि कौन कौन सा बिजनेस कौन से सेगमेंट में मार्केट लीडर है. तो इसमें तिजोरी फाइनेंस भी आप यूज़ कर सकते हो, बट आई थिंक अ लॉट ऑफ दिस लिस्ट वी हैव क्रिएटेड इज हैज़ बीन डन थ्रू मैनुअल स्क्रीनिंग. तो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स के कौन से मार्केट लीडर्स है, वी कीप रनिंग दी स्क्रीन्स एज वेल लाइक फॉर आवर ओन पर्पस. बट जो पहली तीन आपको मैंने चीज़ बताई, तीन चार चीज़ें बताई, आई थिंक मोर और लेस that is that will help you with ideas. एक और आपको चीज बताता हूँ which will be like a cheat code for you, is that on value picker, go to value picker and read some of the threads. And value picker में भी ना क्या आएगा, when you keep reading ना, you will start identifying कि यार ये 10-15 लोग ही हैं जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, बाकी सारे कोई मजाक के मूड में कुछ लिख रहा है, कोई नॉन सीरियस है,
कोई कुछ और लिख रहा है, तो उनका फिर आप उसको आप नॉइज करके फिल्टर कर देते हो. फिर those 10-15 people, I just keep clicking on their profiles and just watching their activities. Like I stalk them. They don't know I stalk them ki what they are doing. Because see, I'm a shameless guy who wants stock ideas. I don't care what anyone else thinks, because मेरे को stock ideas चाहिए and मेरे को अपना framework लगाना है. Because to make huge returns over here, you need to keep your ego in check and keep ego aside. तभी आपका मोटा पैसा बनेगा इस यहाँ से. तो 10-15 लोगों को I just keep following and just looking at their activities, and like over the years I found a lot of good ideas just by following those people. So that is another one that you can use basically. So these are some of the ways I generate ideas. मतलब, like on Twitter, I haven't, like apart from one or two handles, बहुत ज़्यादा स्टॉक आइडियाज जनरेशन नहीं हुआ, मे बी 2-3 हैंडल्स. बट मैं सेक्टर एक्सपर्ट्स ट्विटर पे ज़रूर फॉलो करता हूँ, कि मेरे को रियल एस्टेट का एक सेक्टर एक्सपर्ट पता है, आईटी का पता है, देन एक सेक्टर एक्सपर्ट लाइक जैसे फार्मा का सेक्टर एक्सपर्ट है. डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के जो एक्सपर्ट हैं ट्विटर पे, इनको आप जरूर फॉलो कर सकते हैं, जस्ट टू गेट एन आइडिया व्हाट इज हैपनिंग. सो दैट इज दैट. Great, great. So Ishmohit, like how one can fine tune the diversification and concentration so as to advantage. In the sense, like the house is divided. Some say the concentration is necessary so as to make money, and the view on diversification is also so as to manage the risk. So how you go about it and how you define risk exactly? So my scenario is very simple, Prince. That for every investor, this is going to be different. Simple reason, because every investor has different objective, different conviction level, different access to information, different degrees of hard work. For a suppose now, let's assume a fundamental investor who is like reading some of the con calls and सारी चीजें भी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, एंड फिर भी आपका मेंटल एप्टीट्यूड ही ऐसा है कि यू आर नॉट कंफर्टेबल विद कंसंट्रेशन एट ऑल बिकॉज ऑफ सम पास्ट एक्सपीरियंसेस एज वेल. Because your past experiences in active investing also shapes your own thing as an investor. Like I've seen a few investors who are so risk averse because they've seen the 7 and 8 cycle, because they lost a lot of money. They're extremely risk averse. उनका portfolio भी अब बड़ा बन चुका है, तो they have like 30-35 stocks in their portfolio, and they're like, we'll diversify because we don't want the risk of ruin. Then I've seen a few investors just in front of me in last 7-8 years who've actually like created a lot of wealth like through markets, because they concentrated just on 4-5 businesses that they thought कि ये 4-5 बिजनेस ही पता है, तो इसका मेरे को पूरा आइडिया है. तो यहाँ पे ना कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी का बहुत आइडिया आता है. मैं बार बार स्टूडेंट से भी बात करते रहता हूँ एसओआईसी में. कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी इज समथिंग दैट विल हैव डिफरेंट डेफिनेशंस फॉर यू एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम इन योर लाइफ. तो कॉन्केविटी का क्या मीनिंग है? कॉन्केव लेंस देखा किसी ने, मतलब वो ऊपर से ढका होता है. कॉन्वेक्स लेंस देखा है वो नीचे से, लाइक इट्स गोइंग अपवर्ड्स. लाइक इफ यू हैवंट, you can just simply google it. So convex is something that is like, so Nicholas Nassim Taleb also says this, that convex activities are those activities which have non-linear payoffs, whereas concave activities are those activities which have very very linear payoffs. Suppose करते हैं, अगर आप एफडी कर रहे हो बैंक, पता है 7% तो मिलने ही वाला है, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्केव एक्टिविटी. सपोज करते हैं आपने एफ डी कर ली, उसके बाद आप कॉन्वेक्सिटी में, सपोज फ्रॉम एफ डी यू मूव टू लाइक इक्विटी, तो दैट इज अ कॉन्वेक्स एक्टिविटी. बिकॉज अगर बफेट का भी आप रिटर्न देखो तो 19% सी ए जी आर है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट. दैट इज अ कॉन्वेक्स एक्टिविटी that leads to huge non-linearity in life. So you'll find these concave and convex situations even with businesses at all the times, and you'll find them even in the portfolio approach at all the times. तो ये भी हो सकता है, सपोज करते हैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लाइक एग्जाम्पल लेते हैं, तो सपोज करते हैं कि यू ओनली एम फॉर बिजनेसेस विच हैव हैड अ वेरी हाई वैल्यूएशन, एग्जाम्पल लेता हूँ, एंड वहाँ पे 10-12% अर्निंग्स ग्रोथ है, एंड यू थिंक दीज बिजनेस विल डू वेल फॉर अ 20-year horizon. तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि फॉर यू इट कुड बी अ एक्टिविटी विच इज फॉर 20 years. फॉर मी इट कुड बी, यार मेरे को तो 3 से 5 साल में रिटर्न चाहिए, मैं इस पर्सपेक्टिव में सोचूंगा, देन आई ऑल्सो हैव टू मैक्सिमाइज ऑन वैल्यूएशन. तो वहाँ पे देन दैट एक्टिविटी फॉर एन इन्वेस्टर लाइक मी विल बी अ कॉन्केव एक्टिविटी. बिकॉज व्हाट एम आई थिंकिंग कि यार 10 बिजनेस लूंगा, 10 बिजनेस में मैं 12 से 15% रिटर्न एम कर रहा हूँ, 10 में से 4 बिजनेस में नहीं आती, चलो 5 बिजनेस में नहीं आती, लाइक 50-60% इज अ गुड हिट रेट.
If 50 or 60% of the businesses do not do well, and only 50-60% of the businesses do well, so my returns like barely converge with FD returns or maybe 2 or 3% higher than that. तो उस सिनेरियो में मेरे जैसा बंदा सोचेगा मैं निफ्टी में ही पैसे डाल लेता हूँ, लाइक कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी में. And then like if you're investing, if you're aiming for much higher returns, then higher accidents भी होंगे कॉन्वेक्सिटी में. कि अगर आप 25-30% ग्रोथ वाली कंपनीज देख रहे हो लोअर वैल्यूएशन पे, तो देर इज अ चांस देर विल बी एक्सीडेंट्स एज वेल, बिकॉज वो थोड़े एक्टिव स्ट्रक्चर ज्यादा होते हैं. एक्टिव स्ट्रक्चर का भी एक सिंपल एग्जांपल है कि आपके पैसिव स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कैसे हैं. जैसे आपकी शिप्स हैं, इफ यू थ्रो अ शिप इन अ ओशियन, द शिप विल कीप फ्लोटिंग बिकॉज ऑफ द आइडिया ऑफ बॉयंसी, क्योंकि नीचे से पानी भी फोर्स ऊपर दे रहा है. एक्टिव स्ट्रक्चर क्या, आपका फाइटर जेट है, फाइटर जेट में फ्यूल खत्म हुआ, फाइटर जेट विल क्रैश, राइट. सो दैट इज द आइडिया दैट इफ यू आर एक्चुअली डूइंग एक्टिव इन्वेस्टिंग, then you also have to be on your toes at all the times. तो एक्टिव इन्वेस्टिंग वाली स्ट्रैटेजी में मैं अपने लिए पर्सनली क्या करता हूँ कि आई एम ट्राइंग टू हैव मल्टीपल फैक्टर्स इन माय पोर्टफोलियो. मल्टीपल फैक्टर्स क्या है, एम तो देखो 20-25% अर्निंग्स ग्रोथ पे है, राइट. एंड जितना सस्ता मल्टीपल मिल जाए उतना बढ़िया है. तो मल्टीपल फैक्टर्स में लाइक आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, लाइक जैसे अभी इंडस्ट्रियल्स हैं पोर्टफोलियो में, बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज हैं, फाइनेंशियल्स हैं कंपनी में, राइट. एंड देन लाइक उसके बाद आपके केमिकल कंपनीज है पोर्टफोलियो में, हॉस्पिटल कंपनीज है पोर्टफोलियो में. लाइक ऐसे करते करते यू हैव मल्टीपल फैक्टर्स एंड यू ट्राइंग टू पिक द कंपनी विच कैन ग्रो एट 25-30% इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर. अब हर सेक्टर में तो होने नहीं वाला. अब सपोज कल कर एग्जाम्पल लेते हैं, कल को गवर्नमेंट आके बोलती है जी हॉस्पिटल वाले तो चोर हैं, लूट रहे हैं सबको, इनका बिजनेस बंद कर दो, इनकी रेगुलेशन ला दो इन पे कि प्राइसिंग ना करवाएं. तो इस सिनेरियो में if I'm just running like if I'm just focused on one sector, right, I'll have a massive dent on the portfolio, right. And biggest convexity in life is survival, that is portfolio survival. So that is something, that is a risk which I'm not willing to take. I'll just give you clarity, that is a risk I'm not willing to take कि मैं एक सेक्टर में ही सारे पैसे डाल दूं. Then I'll have 10-15 सेक्टर्स ऐसे करके, पर्सनल होराइजन 15 to 20 कंपनीज का है. बट ये डिफरेंट फैक्टर्स को प्ले करोगे ना, देन इट बिकम्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, बिकॉज इट ऑल्सो कीप्स यू ऑन योर टोज. एक तो मजा भी आता है इक्विटी इन्वेस्टिंग में, एंड देन बिकॉज यू हैव बीन डिसिप्लिन्ड विद वैल्यूएशंस इन द बिगनिंग, यू आर एमिंग फॉर 20-25% ग्रोथ. एक दो सेक्टर खराब भी होते हैं ना, तो बाकी सेक्टर बेसिकली दे पिक अप द लाइक दे पिक अप द पोर्टफोलियो एंड लिफ्ट इट अप. So that is the entire idea of portfolio allocation according to my own eyes. Maybe for someone else it is different. Maybe like I've spoken to a few people like who used to work earlier. They like in 2-3 companies they like literally bet the farm and they made non-linear returns. फिर उनसे भी बात हुई है जिन्होंने 2-3 कंपनीज में बेट द फार्म करा एंड दे लाइक लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन 2 कंपनीज एंड दे वर लाइक नहीं हम तो अब ये नहीं करेंगे. तो आइडिया है कि सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट होएगा इसके साथ, बट मेरे लिए 15 टू कंपनीज वाला फिलॉसफी with 1 or 2 major concentration in stocks works a lot better because that gives me peace of mind. किसी के लिए 30 स्टॉक हो सकता है, किसी के लिए 5 हो सकता है, but that is the number which can be different for each and everyone because we are built differently. Great. So in between, I'll be taking questions from the attendees who have written their questions in the comments. So one is from Vijay Kumar. He's asking which sector is more beneficial of consumption theme? Is it music streaming or bottler business? See, consumption, see, there are different types. Again, I won't get into like recommending a business or something, but there are different types of consumption. And पहली चीज आपको वैल्यूएशन पे भी ध्यान देना है, तो उसमें कुछ अलग, इट्स अ डिफरेंट consumption like in the music licensing business, because you really need people to actually start paying for music subscriptions, right. So that is a change of habit that you want to occur. But एक habit तो उस business में भी अच्छी क्या है कि you're anyways making money in terms of like your licensing business, that whenever someone is listening to a song you make 10 paisa per stream. So that anyways is a habit and that is growing. So again both are different factors for me. इसको मैं एक कंजम्पशन की बास्केट में नहीं डालूंगा, क्योंकि मेरे लिए वो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजम्पशन है. इट्स लिटरली लाइक आस्किंग कि जैसे अगर शादी हो रही है तो विधान फैशन अच्छा करेगा या डीमार्ट अच्छा करेगा. दोनों डिफरेंट चीजें हैं. So DMart is like for affordable, like for basically is basically like lowest prices, and for the other one it's a specialty retailer. तो ये कंजम्पशन में भी देर आर डिफरेंट सब सेक्टर्स. तो आप बेवरेजेस वाले को आई थिंक द बेटर कैटेगरी टू कंपेयर इट टू विल बी अ बिजनेस लाइक विच इज इन लाइक एडजेसेंट कैटेगरीज. आप बेवरेजेस को कंपेयर कीजिए कि आज जूसेस की कैटेगरी में कितनी ग्रोथ है. आप कंपेयर कीजिए कि बेसिकली
आसपास अगर आप और थोड़ा सा बाहर निकलेंगे उस कैटेगरी से, तो हेयर ऑयल वाली कैटेगरी में कितना पेनिट्रेशन है, टूथपेस्ट वाली में कितना पेनिट्रेशन है, वहां से कंपैरिजन करेंगे जब आप एक किराने की दुकान पे जाते हैं जो सामान खरीदने, दैट विल गिव यू अ बेटर आइडिया. एंड again, my idea is to just have this mental model framework for you set, is that simply what you can do in these FMCG type companies is that simply x out the value, just look at the volume, एंड वॉल्यूम ग्रोथ का ना अपने पास एक टेबल बना लो एक्सेल पे, और उसको हर 6 महीने में या तो एक साल में अपडेट करते रहो. And then I'll also have a table of multiples, what multiples these companies are trading at, because markets are always anchored to the future multiples. Always remember this. I agree कि trailing 12 month देखना चाहिए, but future multiples is something that the markets are anchored to. So always look at what are FI24, FI25 multiples, and then do the comparison. Maybe you start finding value that a company which is growing at 4% volume is growing volumes at 4% is at 70p. A company which is growing volumes at 18% is at 45p. So maybe there is some idea of value in this company which is growing volumes at 15%. This is a simple activity which all of you can do, right? That can help you a lot in this, basically in this idea of looking at consumption businesses. Because um, over the years, I've seen that whenever volume growth happens in double digits, like market just gives them a higher valuation over a period of time. And if you do this experiment, तो आपको काफी help हो सकती है इसमें. But at the end, I can't compare a music and a beverages sector. मतलब it's very difficult for me to do. Right. So another question is where you see long runway and immediate tailwinds except the financials. So again, like I'll just name some of the categories जो मेरे को categories में दिखता है कि अभी काफी कुछ हो रहा है. तो एक तो आपकी कैटेगरी में फाइनेंशियल्स की तो चलो हमारी बात होगी. मैं फाइनेंशियल्स में भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल्स. Then some of the categories which have been doing well, irrespective of capex happening or not, is that your uh, cables and wires businesses, because volume growth over there has been 18-20% over a period of time now. And एक दो साल के नहीं, पिछले 15 साल से मतलब numbers have been there. 2-3 years have been lumpy. Then within chemicals, I'll go towards the fluorine players and just hope, wish, and pray that valuations become cheaper for us, because that is what eventually leads to our returns. Because fluorination में भी इस टाइम पे क्या हो रहा है कि जो न्यू एज फ्लोरोपॉलीमर्स हैं, लाइक सो आई विल गिव यू एन आइडिया दैट financial times में भी article आया था. I'll share it with all of you, that semiconductor players like TSMC and people are finding it difficult to expand because of shortage of new age fluoropolymers in the world. And India say there is literally just one company which makes fluoropolymers. And that company has grown its fluoropolymers business literally from zero to 1,000 crore run rate in last 4 or 5 years. Because entry barrier क्या है कि जैसे ही आप fluoropolymer बनाओगे, then you have to send it to the customer for approval. Customer will take out some deficiency in that. He'll send it back to you. Then again you will make it and send it to customer for approvals. So it's a 4 or 5 year cycle to get the products approved. So that is one place I'm extremely like I like that space because entry barrier बड़ा evident है. फिर auto ancillaries में look for companies which are going beyond their base business, जो अभी टाइप्स करें जिन्होंने बैटरी मैनेजमेंट कंपनीज के साथ जो वर्ल्ड लीडर्स हैं BMS सिस्टम में. देन लुक फॉर एस्थेटिक कंपनीज जो ऑटो एंसिलरी में है, बिकॉज लिटरली अ सिंपल बिजनेस टू अंडरस्टैंड प्रॉक्सी प्लेयर टू द इंटायर थिंग. दीज आर सम ऑफ द लाइक कैटेगरीज. एक्चुअली होंगी तो और भी अभी, क्योंकि वॉच लिस्ट नहीं खुली हुई सामने, तो जो memory serves me right, these are some of the categories that I am actually looking at. Forging companies might do well, बट फोर्जिंग कंपनी में क्योंकि सिक्लिकलिटी का एक एलिमेंट बहुत है, तो मेरे को थोड़ा सा डर लगता है उसके अंदर कि एम आई लेट इन द साइकिल. आई कीप आस्किंग दैट क्वेश्चन टू माई सेल्फ, बिकॉज फोर्जिंग कंपनी में द लार्जेस्ट फोर्जिंग प्लेयर्स हैव एक्चुअली नाउ डाइवर्सिफाइड इट सेल्फ अवे from from trucks to actually like landed a order of $150 million for artillery forging. right? मतलब यहाँ से artillery export कर रहे हैं मतलब defense में. So that is a unique thing which looks interesting. Then बाकी जो दो छोटे players हैं forging में, I think Forgings और Maram Krishna Forgings, जो they have a lot of backlog of orders. And forging is another place where India has almost 8% of the entire world market in terms of export. Right? China has some 40% odd. So a lot of orders have come in for these companies. So this is another interesting area. But I keep asking myself कि कहीं मैं late तो नहीं हो गया cycle में. इस वजह से like I'm a little bit skeptical. So I keep asking myself this question. So that is one area that looks interesting.
But these are some of the generally like these are some of the areas that I find very very interesting. Consumption is like an evergreen sector in India. If you find something growing volumes in double digits, तो वहाँ तो देखना ही चाहिए 100%. फिर नीश और प्रॉक्सीज में आ जाओ. कास्टिंग कंपनीज हैं जो इस टाइम पे मतलब वॉल्यूम डबल करने की गाइडेंस है. 16,000 टन की है. 32,000 टन पर एनम करना है अगले 2.5-3 साल में. So that company is exporting to US railroads. So these are some of the opportunities that I'm looking at apart from financials. Financials so I think तो consensus bet अभी बनने लग गया है. अभी सब लोग आने लग गए हैं इधर. जब सब कहेंगे ना कि यार ये वाली कंपनी अगला बजाज फाइनेंस है, ये वाला अगला HDFC बैंक है, तब वहां से भाग जाने का टाइम है. मतलब that is just my way of my temperature check. Great, great. So there is one question on fluorine story, like how to play fluorine story. This is from Vinod Kumar. Yeah. So they are like majorly अभी तो है क्या. पहले तो मैं आपके साथ थोड़ा सा उसका साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी टाइम और इन सब चीज़ों की मतलब 2 मिनट का आंसर आपको पूरा बताता हूँ इसमें कि अभी फ्लोरीन में बहुत सारी कंपनीज वांट टू एंटर. वेदर इट्स अ दीपक नाइट्राइट, वेदर इट्स एन एस्टेक लाइफ साइंसेज, वेदर इट्स अ जुबिलेंट इंग्रीविया, वेदर इट्स अ अनुपम रसायन. And three major companies are already doing it. That is Gujarat Fluorochemicals, Naveen Fluorine, and SRF at the moment, right? So the thing with these three companies who are already doing this is that they've had multiple decades of experience in handling your hydrofluoric acid, which is a very very volatile substance. जब आपको reaction करना है उसका, तो एक तो आपका आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन एक तो पोटेशियम क्लोराइड करके चीज़ और एक HF करके चीज़ है. इन दो ये दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स. एंड फ्लोरोस्पार ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं ना कहीं से माइनों के आते हैं. मोरक्को से आता है, चाइना से आता है, स्पेन से भी आता है. तो दीज कंपनीज हैव दैट सोर्सिंग कैपेबिलिटी एज वेल. So idea is that the new companies which want to enter, they'll just enter it from my like understanding of things. That they'll enter it, but they'll do fluorination along with other chemical reactions. माने आप एक सिर्फ फ्लोरिनेशन ही नहीं कर रहे, आप डिफरेंट केमिकल रिएक्शन साथ कर रहे हो. जैसे जुबिलेंट इंग्रीविया वांट्स टू एंटर, इट विल डू फ्लोरिनेटेड pyridines. pyridines प्लेटफॉर्म में जुबिलेंट इंग्रीविया perhaps is the lowest cost producer in the world. मतलब ऐसी कंपनी है जिसपे चाइना ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी क्योंकि देयर कॉस्ट वर इवन लोअर देन चाइना. बट अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन द कंपनी. एक कंपनी का थोड़ा सा कम्पिटिटिव एडवांटेज बताया तो जस्ट रिमेंबर दिस कि आई एम नॉट इन्वेस्टेड ओवर देयर. सो आप खुद उसके बारे में सोच सकते हैं. देन इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इज कि अब फ्लोरीन स्पेस में आपकी फ्लोरोपॉलीमर्स हैं. देन आपका आपके बेसिकली फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स में फ्लोरीन का यूसेज बढ़ गया बिकॉज इट लीड्स टू हायर एफिकेसी ऑफ ड्रग्स. एंड एग्रोकेमिकल्स में भी बढ़ गया बिकॉज इट लीड्स टू हायर एफिकेसी ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट. तो यहाँ पे यूसेजेस बढ़ रहे हैं. तो फ्लोरीन स्पेस में जो फ्लोरोपॉलीमर्स वाला बिजनेस है दैट हैज वेरी हाई एंट्री बैरियर्स बिकॉज यू नीड टू सेंड सैम्पल. अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो, डोमेस्टिक बिजनेस में इतने नहीं होंगे अगर PTFE आप डोमेस्टिकली कर रहे हो. अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो so you need to have a lot of grades of PTFE to be approved. You need to have that product approved again and again. और ये approval और rejection की cycle चलते रहती है. It takes at least 3 to 4 years to get through. So that is one area which has high entry barriers और एक ही manufacturer है उसका भी country में, that is Gujarat Fluorochemicals. दूसरा है SRF करके जो agrochemicals में they have built a almost if I'm not mistaken 2700 crore का वो business होएगा. तो more than 2000 crores of businesses in agrochemical intermediates. And SRF is the only company in India which is working with all the major agrochemical innovators in the world. जितने भी मेजर इनोवेटर्स हैं 20 इनोवेटर्स हैं और उनके सबके साथ SRF इस टाइम पे काम कर रहे हैं. हालांकि एक और कंपनी है नियोजन केमिकल्स, वो भी अच्छा काम कर रही है बट उसका वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव हो गया था पीछे. एंड कैश फ्लो उसका थोड़ा सा मतलब बेसिकली थोड़ा सा डिसकम्फर्ट देता है क्योंकि अभी माइनस चल रहा है कैश फ्लो. देन थर्ड आपकी नवीन फ्लोरिन है जो फार्मा में जिन्होंने CGMP लाइक लाइक CGMP प्लांट्स लगाए हैं. एंड वो फार्मा क्रैम्स काफी अच्छा कर रहे हैं फ्लोरिनेशन में. एंड दे वांट टू ग्रो दिस टू अ 800 करोड़ बिजनेस बाय FY25 FY26. तो लेट्स सी अगर होता है नहीं होता. बट वो जितने भी पेटेंटेड रेफ्रिजरेंट गैसेस हैं इस टाइम पे नवीन बना रही है इन अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग अग्रीमेंट विद हनीवेल. बट अगेन अ रिस्क or a standard disclaimer for you, Naveen's starting valuations are expensive today. So actually have that thing in mind कि आज valuation महंगी है, अगर growth नहीं आई तो valuation बहुत जल्दी से उसकी collapse भी कर सकती है. इस चीज़ को आप याद रखना. But fluorination में I think apart from other companies which are trying to enter the space, they will take a lot of time to sort of get to where SRF
Naveen or a Gujarat Fluorochem are already there. So maybe study these three companies and find something that works for you. Anupam Rasayan is also trying, but again जैसे नियोजन और अनुपम का है, मेरे को ना कैश फ्लो पे अनसर्टेनिटी लगती है, क्योंकि ये बिजनेस का बिजनेस मॉडल दूसरा है. ये ना इन्वेंट्री बहुत होल्ड करते हैं. Whenever you're doing a lot of pharmaceutical intermediates, you hold a lot of inventory, so your cash gets blocked in inventory. So that is something which actually makes me a bit see, अगर ये मेरा प्रोसेस है, मेरे को थोड़ा सा डर लगता है. बट ये जो इन्वेंट्री ब्लॉकिंग वाली चीज़ है एंड आपका कैश वहाँ पे लग जाता है, सो दिस इज समथिंग you have to actually like manage your in your own process कि whether you're comfortable with that or not. So that is that, क्योंकि I think एक और अमी ऑर्गेनिक्स भी कंपनी है जो फार्मा इंटरमीडिएट्स में थी, उसका भी कैश इन्वेंट्री में ही फंस जाता है, बिकॉज नीड टू हैव स्मॉल वॉल्यूम इन्वेंट्री एंड मल्टीपल एसकेयूज. तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम रहती है. तो इन तीन कंपनीज में अगर आपको पढ़ना है तो आप कुछ पढ़ सकते हैं, बट वैल्यूएशंस का थोड़ा सा रिस्पेक्ट करके कि कब आपको वैल्यूएशंस फेवरेबल लग रही है, बिकॉज ग्रोथ तो ट्रिगर्स इस टाइम पे तीनों कंपनीज में ही है. Right, right. So there is one question from Vinod Kumar. Tax paid is P&L and cash flow statement are different. How to analyze this and what would be the limit of difference? See, there is a 1 year difference between tax, like cash taxes paid out of cash flow and PNL, though it is not too much of a thing. But if this keeps occurring over and over again ना, तो be a bit skeptical. मतलब ये मेरे को याद है, क्वालिटी करके क्वालिटी डेयरी कंपनी थी, उसका हर बारी मतलब उस टाइम पे तो काफ़ी स्टोरी थी कि नेक्स्ट नेक्स्ट मदर डेयरी और अमूल यही बनेगा, बिकॉज स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा था. तो उस टाइम पे हर बारी उसका cash taxes paid were always different than the accrual taxes which were shown in PNL. So that was a very big red flag, because वो last 5-6 years से ये चल रहा था उसमें. So this is something that if it is too different for a very long period of time, so you should probably ask them and also like run your other forensic checks कि इनका मतलब ट्रेड रिसीवेबल कितना एज अ परसेंटेज, कंपेयर इट विद द पीयर्स. बिकॉज दिस क्वालिटी कंपनी में आई रिमेंबर कि यार दूध बेचने का काम है, मतलब यू नीड टू बी पेड लाइक ओवर द काउंटर. अगर आप बेच रहे हो तो हाथों हाथ पैसे आने चाहिए. तो इस बिजनेस में रिसीवेबल्स और इन्वेंट्रीज वर द हाईएस्ट इन द सेक्टर. इवन इफ आई कंपेयर्ड इट टू अ हैटसन, तो इन्फोसिस है इस सेक्टर का या टीसीएस है, तो हैटसन का तो रिसीवेबल डे ही कुछ नहीं था, माने 1 या 2 डेज का रिसीवेबल है मैक्स. तो इस बिजनेस का रिसीवेबल डे कुछ 1.5-2 महीने शायद से उस टाइम पे होता था, इन्वेंट्री भी हाईएस्ट होती थी. सो यहाँ पे देन यू कैन डू दी बेसिकली अदर चेक्स एज वेल. ट्रेडिंग रेवेन्यू बिजनेस का बहुत था. ट्रेडिंग रेवेन्यू आप कब करते हैं, दिखाते हैं बिजनेस में, बेसिकली व्हेन यू वांट टू आर्टिफिशियली इन्फ्लेट द रेवेन्यूज एज वेल, यू आर शोइंग इंटेंशनली लाइक ट्रेडिंग रेवेन्यूज. तो ये चीज तो यार बेसिक हाइजीन चेक्स हैं कि आपको ये हाइजीन चेक्स तो करने ही करने हैं. मतलब आई तो जस्ट यूज अ सिंपल लाइक स्क्रीनर एक्सेल शीट विच लाइक जस्ट थ्रोज देम इन फ्रंट ऑफ मी, तो मेरे को ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता. बट ये जो बेसिक हाइजीन चेक्स हैं, दिस हेल्प्स यू अलॉट. जैसे अभी आई वोंट नेम द कंपनी बिकॉज इट्स अ रीसेंट एग्जांपल, तो ऐसी कल को परेशानी ना हो. तो देयर इज अ कंपनी विच इज इन केमिकल्स. इट हैड अ 700 or 800 crore odd termination contract income fee. अब contract income fee, everyone in the like audience will agree with me, is a one off income, right? Contract income is a one off income, and that company actually didn't show it as an other income or exceptional gains में. कंपनी ने सीधा रेवेन्यू में डाला उसे, एंड जो भी आर ओ सी आर ओ ई जो भी रिटर्न रेशियोज थी, those were like calculated on the basis of that contract income being included in EBITDA and revenue. So that just gives you an idea कि यार कितना aggression है, मतलब दिखाने के लिए. The numbers aren't there, will make the numbers up. मतलब literally it was that criteria. So yeah, you have to be careful. So this is part and parcel of the game. But I'll also give a suggestion. Don't become a like how do I say this? Don't become a lunatic of accounting. अगर lunatic बन जाओगे ना अकाउंटिंग के, फिर तो कहीं पे भी नहीं इन्वेस्ट कर पाओगे. 50 साल पुरानी गलती निकाल लोगे कंपनी की, 60 साल पुरानी गलती निकाल लोगे, फिर कहोगे यार इसमें तो बेकार है, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं. बेयर मार्केट में अकाउंट बड़े सारे अकाउंटेंट सामने आ जाते हैं बाहर, बट आई थिंक बेसिक चेक्स भी अगर सही है ना, तो you don't have to go 15 years back or 20 years back, because some discrepancy will always be there in a lot of companies. Like even in companies that you're invested, the discrepancy just hasn't to be मतलब मेजर डिस्क्रिपेंसी ना हो कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में ही 30-40% ऑफ पैट है. लाइक दोज टाइप ऑफ डिस्क्रिपेंसीज आर लाइक जस्ट इन द फेस. बट अगर छोटी मोटी डिस्क्रिपेंसी है देन लेट इट बी. लाइक तो क्योंकि बड़े नए इन्वेस्टर्स आते हैं जो अकाउंटिंग सीखते हैं, उसके बाद क्योंकि मेरे को क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स के बहुत सारे
क्या तो भाई तू कहाँ चला गया 2008 में, वो हो गया 2008 में, मैनेजमेंट चेंज हो गई, नई जनरेशन आ गई, 6 साल से कुछ गलत हुआ नहीं। तो जस्ट try to avoid that ki going too much into the past, because that will blur your framework, because money is always made on the like future, not on like going for 20 years behind. So that is something which I will always suggest that you follow. Right. So there is one question from Pahadi. He's asking Piramal derated big time after demerger. So what new information surfaced after its demerger for retail investor, which wasn't available before to evaluate it better? See, individual stock specific question है, चलो I'll just answer it, but I won't, again I'll come with a standard disclaimer, buy sell तो है ही नहीं, मतलब just take the information, do whatever you want to do with it, because it's just an educational space. So idea was कि जब CMO business का उन्होंने mix disclose करा, तो it was majorly generics, it wasn't patented business, and patented business is more non volatile. So जो CMO business का mix था, that is what actually ended up changing it. But if that changes 2-3 years down the line, if the margins go back up, then maybe the company does well. But at the end of the day, अगर आप सारी फार्मा कंपनीज को लेते हो इस टाइम पे, चलो जितनी भी एपीआई कंपनीज देते हैं, आप कंपनी का नाम लो और मेरे को बताओ कौन सी कंपनी डी रेट नहीं हुई लास्ट 12 to 18 months में. These are some things which are known as sectoral breakdowns. Remember this because this will save you a lot of pain over a period of time. That whenever the sector starts breaking down together, so there is something that is happening in the sector. जैसे NBFCs they broke down together in 17-18. जो ज़्यादा शैतानी वाली NBFCs थी, I think like your like back then DHFL types, they broke down much earlier. Bajaj Finance also broke down, but it recovered because they didn't have any loophole in accounting. But over here as well in pharmaceuticals, currently we are going through a sectoral breakdown. Like a lot of companies had higher raw material prices and they haven't been able to pass it on, and margins आपके इस वजह से squeeze हो चुके हैं. And squeeze के अलावा की demand भी squeeze होगी, because पहले like inventory was stockpiled with a lot of customers, that led to artificial boost in revenues, जैसे diagnostic companies के साथ हुआ. And now you have a higher base, so you can't beat that base, जैसे अभी DVs के केस में हुआ. Then all of a sudden you have raw material spiking as well. So this is a classic sectoral breakdown जो हम stage 4 कहते हैं investing में. And again you have to be very very careful on your toes, and one way to deal with it is to have multiple factors in a portfolio, and another way to deal with it is कि these are businesses which maybe अगर आप अभी देख रहे हो तो इस टाइम पे शायद से 2-3 क्वार्टर बाद इनका शायद से बेस फॉर्मेशन स्टार्ट हो. अगेन आई कांट प्रिडिक्ट, but having studied these businesses, maybe after 2-3 quarters, maybe a new base starts forming, and these companies again come back into play. But these cycles will happen over and over again. It's just not limited to Piramal. I think a lot of other like API businesses have gone through the same process. Right. And again, this is some company specific. I read it out. If you want to take, then it's fine. Otherwise, we move on. So after merger, can we expect Shriram Finance to become the next Bajaj Finance? I don't have an answer to that because I haven't done study on that company. Okay. One question is on sell thesis of financials. Am I audible? Yeah, the person is asking your sell thesis on financials. यार मतलब जी, बॉटम ऑफ द रिग वाले जो ले रखे हैं बहुत सिंपल है, 1x प्राइस टू बुक आती है उस पर. आई डोंट थिंक दीज बिजनेसेस विल गेट मच हायर देन 1 or 1.2x प्राइस टू बुक. So that is the point of time. जिनमें मैं इन्वेस्टेड हूँ, आई विल स्टार्ट टेकिंग मनी ऑफ द टेबल. Then there are some like financials which I'm invested in, which have a bit higher quality over there, because again buying price is like 1x price to book, and their ROE profile could be some 16-17%, right? So over there I'll just sit and watch that how it happens. Maybe it comes in next quarter, maybe it comes in next 3-4 quarters, but that is a thesis bet कि आपका thesis बना हुआ है उसके ऊपर, then you're looking at it. Then जो bottom of the table वाले हैं उस पे तो at 1.2 1.3x price to book I'll start becoming careful, because like I think इनका ROE profile काफ़ी सारों का क्योंकि इक्विटी डाइल्यूशन पास्ट में बहुत हुआ है, तो ROE profile 15-20% जाना काफ़ी मुश्किल है. So that is one area that I will like, that is one area that I'll look to sell some of the ones that I have. Then in microfinance, right,
So in microfinance, when they start reporting some 70, 80, 90% growth, and if that growth comes for next like 3, 4 quarters, then again, if it becomes too good to be true type growth, then that is another point of time that I might look to sell. Then एक simply selling criteria क्या है कि अब suppose करते हैं कि एक business है मेरे पास financials में, आज से 3, 4 quarters बाद अनाप शनाप वैल्यूएशन पे चले जाते हैं, राइट? सो लिटरली इट गोज टू सम ऑब्ससीन वैल्यूएशन. Over there, I'll have two choices. Either I sell as a part of my fundamental process, or I just simply sell them when it breaks the 40 weekly moving average. That is the second thing that you can simply do it. कि अगर 40 वीकली मूविंग एवरेज तोड़ रहा है वहां पे, तो आप टेक्निकल से, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज तो एनीवेज फंडामेंटल्स कह रहे हैं बेच दो, but if you want to juice out the last returns, that is the second way to practice it. Because a lot of value investors I know, they got into Alexia at 800, but they were out at 1600. They didn't have this process of riding the entire thing, right? A lot of investors I know, they bought IEX and they were out early, right? They didn't have that process of like capturing those entire gains. And another one is like Neogen Chemicals, right? They didn't have the process of capturing the entire gains. So that is like second tool can help them over there in capturing those entire gains if they come, right? So that is another process that you can do. क्योंकि fundamentally तो anyways valuation महंगी हो चुकी है, you can't make sense of it. So it comes on your chopping blocks. कि portfolio में मतलब वो होता है ना कि वो bomb को आप diffuse कर रहे हो, तो वो basically this will this like 40 weekly moving average or exponential moving average, like it will help you to diffuse the bomb of selling at that point of time. Right. So Vineet, you can quickly unmute and ask your question. Hi, Ishmohit. Happy New Year. Hi, Prince. Happy New Year. And Happy New Year to everyone. Ishmohit, my question is very basic, like the ABC of the investing, the start. I think I heard you mentioning that some of the fluorine players are out of valuation comfort zone, and similarly, some of the companies which you are focusing on, they are out of valuation comfort zone. Since valuation is something which is very personal, probably something, for example, Bajaj Finance today might not be comfortable for me, but some people might be comfortable for Bajaj Finance at today's rate. So when you say you are not comfortable at the current valuation of some or the other company, so what all parameters or criteria you think of while looking at the valuation that it is compelling right now to enter? See, firstly, Happy New Year, Vineet, and thank you for the wishes. Hopefully, you and your family are doing great. So, second thing क्या है कि valuations के लिए यार just turn the table around and just think of valuation as an odds का meter, right? कि it's a meter of odds. So, let's assume that there is a company which is at 80 PE today, example, and earnings growth profile is 15%, right? So what P means that for 1 rupee of earnings, I'm paying 80x the price for 1 rupee of earning. मेरे को 80 times देना पड़ रहा है. So probability of that re-rating from there, just as an example, seems to be very very remote. क्योंकि earnings profile ही यार 15% है. अगर by chance what you have to think like, what if the earnings profile derates? What if it goes to 12% or what if it goes to 10%? In that scenario, maybe if the P remains constant, वो तो सब ठीक ही है, but मेरा रिटर्न कितना आ रहा है 10-12%. तो मेरे लिए तो बेंचमार्क ही निफ्टी है. निफ्टी का लॉन्ग टर्म रिटर्न कितना है 12 to 14% के बीच में. सो इट्स अ फेलियर ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इन माई thesis in that scenario. But actually, if I'm going to buy something at 60-70p, the growth has to be 35-40% types. Only then maybe it starts making sense for me. But एक बड़ा simple valuation का जो criteria आप use कर सकते हो, that is this peg ratio works like a charm. I think it has like over a period of time in a lot of businesses it has worked, and whenever I haven't respected it, actually I got killed in those businesses. तो आपको यहाँ एग्जाम्पल देता हूँ मैं कि सपोज करते हैं कि कोई कंपनी है, सपोज केबल एंड वायर में एक बिजनेस है, आज 30 की पी पे है, वॉल्यूम ग्रोथ गाइडेंस उस बिजनेस की 18-20% है, विद सम मार्जिन एक्सपैंडिंग ओवर नेक्स्ट 1 to 2 years. तो इट्स बट नेचुरल टू अज्यूम कि पैट ग्रोथ विल बी 22-24% के बीच में, right? And today P ratio is at 30 times. So I'll just simply do a peg of that business. If it comes to some कि peg का क्या फॉर्मूला है कि P upon earnings growth. तो मैं फॉरवर्ड पेग भी करता हूँ, ट्रेलिंग पेग भी करता हूँ. ट्रेलिंग पेग में क्योंकि 33% की अर्निंग ग्रोथ आई है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो फॉरवर्ड पे भी करता हूँ. तो इट्स लाइक
it's available at 1.25x peg ratio, then that is something which I find comfort in कि मैं 1 रुपए की earning के लिए I'm not paying too high a price, right? Then simply like sometimes you'll find opportunities जो होंगी 8 या 9 की PE पे, right? And over there earnings are looking that they'll double in next 2-3 years. So this is one framework to follow. So this is the framework which will apply to most businesses, not to all businesses. In some scenarios, like especially in consumption or these retail stocks, I'm also trying to like actually मैं भी साथ साथ आपके समझ रहा हूँ, क्योंकि जब कोविड क्रैश भी आया था, even at that point of time businesses like Titan and stuff were still like they didn't fall below 47-48 PE because earnings growth वहाँ पे 20-25% की over a long time आते ही जा रही है. Very few businesses you will find where conventional valuation frameworks they stop working, right? Very few businesses. But ये नहीं कि हम very few business के चक्कर में हर जगह वही वाला valuation framework लगा दें. So that is why people get killed. Actually, I also got killed. I'll just give you some examples. So I own these 3 businesses. So there was an energy exchange which luckily like we were able to get out, and because selling process उसको follow करा पूरा कि यार इसका वैल्यूएशन महंगा हो गया, इससे निकल जाओ. एंड ठीक है, जो भी था 6 to 9 months में सोचा नहीं था इतना रिटर्न बनेगा, बन गया. देन ये ब्रोमीन वाला था, नियोजन का एग्जांपल लिया, तो दैट आल्सो लाइक विद इन 8-9 months was almost like some 80-70-80% up, and again valuation started making sense. Then third was an animal API company. Now over there guidance was कि margins will keep improving. Now we being investors, ठीक है मार्जिन इंप्रूव होते रहेगा, अभी पी 70-80 का चल रहा था, बट एक्चुअली ऑपोजिट हैपेंड. मार्जिन स्टार्टेड लाइक गोइंग डाउन. तो जो थीसिस था ना वेरिएबल ही खराब हो गया उसमें. तो 2 में तो मैं बेच के निकल गया, तीसरे वाले में नहीं निकला. एंड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज सम 140-150% अप फ्रॉम द इनिशियल बाय प्राइस. I think 120-130% type. Then all those gains evaporated within 3 months and had to end up selling at one उतने ही प्राइस पे जितने पे आया था उससे 5-10% नीचे ही बेचा. बट थर्ड वाले में प्रोसेस को रिस्पेक्ट नहीं करा कि या तो उसमें अगर हाई वैल्यूएशन पे 40 वीकली मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन आता तो एग्जिट पे निकल जाता, जो ऑलमोस्ट 8 बाइंग प्राइस से 90% ऊपर था. बट हाई वैल्यूएशन इतनी थी तो वहां पे मेरे को एग्जिट को बहुत क्लोजली फॉलो करना है. बट दैट वाज अ बिजनेस व्हिच वाज नॉट अ पैसिव वन, जैसे टाइटन और ये सब हम एग्जांपल ले रहे हैं. तो बहुत फ्यू बिजनेसेस में हाई वैल्यूएशन सस्टेन्स. बट द आइडिया इज विनीत फॉर अ बिगनर एज वेल कि अब उन फ्यू बिजनेसेस से मार्केट में 5,000 कंपनीज हैं. अब 5,000 की 5,000 कंपनी को उस मेथडोलॉजी पे अगर वैल्यू करोगे you will make losses for sure, because हर बिजनेस उतना ज्यादा कंप्लीटली डोमिनेंट बिजनेस नहीं है पिछले 20-30 साल से. सो दिस इज फॉर अ बिगनर की वैल्यूएशन आपके लिए ऑड्स की तरह. पेग रेशियो देखिए, बहुत ज्यादा अगर हाई वैल्यूएशन देंगे और अर्निंग्स का अगर सरप्राइज खराब की तरफ आया देन उसी हिसाब से पिटाई भी होती है. सो जस्ट रिमेंबर दिस एंड बी केयरफुल अबाउट इट. So, Ishmohit, a follow up on this. For example, you mentioned Titan and the likes, which didn't give a lot of drawdown in the liquidity crunch time of COVID. So, do you think that markets are efficient enough that they can actually, arrive at a good value for the future growth, which is baked in the prices today? For example, some of the companies which are getting derated in some of the sectors, probably they are baking in the future growth getting normalized. And similarly, what has happened in IT, they are also getting derated because the abnormal high growth which they had seen in the COVID period, it is already coming down. So don't you think that markets are already efficient enough and they are pointing that the future of the growth, future growth is going to be slower than what it used to be if it is getting derated? Yeah, so markets are almost efficient only. मतलब markets completely efficient नहीं है, almost efficient है. वो जो almost और completely का difference है, therein where lies the opportunity for a lot of investors. So I'll just give you another example, right? So there is this idea of growth traps and value traps as well. तो एग्जाम्पल लेते हैं, चलो टाइटन का एक एग्जाम्पल हो गया. अब टाइटन जैसे कितने बिजनेस हैं यार इंडियन मार्केट्स में? हार्डली 6, हार्डली 8, इससे ज़्यादा तो आप नेम भी नहीं कर सकते, राइट? सो that is that. And secondly thing to remember is that if derating cycle is happening, if there are if there's high volume selling that is going on in a particular sector, and if you want to go and then buy over there, then you have to be very sure कि एक तो मेरा टाइम होराइजन ज़्यादा है, आई थिंक मेरा फंडामेंटल थीसिस है इसमें
कि 3-4 साल में this company will do very very well. Or B, in such a scenario, B, like it could be also that you are wrong, maybe the E is going to go down. अगर earnings नीचे गिरता है तो फिर P आपका वापस ऊपर निकल जाता है. So be very doubly sure about it when you are looking at such companies. So what was the second part again, Vineet? ये D rating वाला था ना? हाँ हाँ हाँ. तो हाँ, डी रेटिंग यार, अब आईटी सेक्टर जो प्री कोविड जो मल्टीपल्स था, probably मैंने आईटी सेक्टर में, आई एम नॉट टू क्वालिफाइड इनफ टू से दिस, बट एज अ जस्ट लुकिंग एट वैल्यूएशंस, it seems that a lot of the companies might be heading towards the pre-COVID multiples. And during that cycle, see, हमेशा जब भी कोई चीज गिरती है ना ऊपर से, like कोई चीज अगर माउंटेन से फेंकी जाए, it comes down and then it forms a base. So let the entire sector be in a sideways trend for a while before you start doing some bottom fishing and stuff. I think that is how I think about it, because if earnings they start degrowing, then your P starts expanding, then your P falls more, then the price falls more. तो इस सिनेरियो में थोड़ा सा वेट करना बेटर रहता है, जब एकदम फास्ट डी रेटिंग हो जाए. बट फास्ट डी रेटिंग में फिर कभी कभी क्या आएगा कि देर आर कंपनीज विच यू ऑलवेज वांटेड टू बाय, देन यू स्टार्ट गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, देन यू कैन डू टाइम आर्बिट्राज ओवर देयर. जैसे एक ऑफ द हाईवे टायर वाली कंपनी है, एंड दैट कंपनी ऑलवेज हैज दिस साइकिल ऑफ लाइक एग्रीकल्चर डूइंग वेल इन यूरोप एंड नॉट डूइंग सो वेल इन यूरोप. जैसे अब ये एग्रोकेमिकल वाली भी जो कंपनी है पीआई इंडस्ट्रीज, इसका भी यही साइकिल है कि जब ये एग्रीकल्चर अच्छा निकलता है 1-2 साल के लिए, तो द स्टॉक्स गो इन अ साइडवेज ट्रेंड, और दे स्टार्ट कमिंग डाउन और करेक्टिंग. So maybe that's the point of time, if you have that patience to do time arbitrage, तो वहां पे उस टाइम पे आप टाइम आर्बिट्राज भी कर सकते हो कि वैल्यूएशन सस्ता हो गया, लॉन्ग टर्म थीसिस इंटैक्ट है, 2 से 3 साल का अगर आपके होराइजन है, तो वहां पे आप बैठ के उसको आराम से बैठ के ले सकते हो. बट एकदम जब डी रेटिंग हो रहा होता है, तो जस्ट बी अ बिट केयरफुल एंड ऑलवेज आस्क योरसेल्फ वेदर आई एम राइट or whether Mr. Market is right. 95% of the times you'll find that Mr. Market is right. So always respect the markets in those scenarios. But where you think Mr. Market isn't right, you have a better horizon of the business या longevity आपको ज्यादा अच्छा लगता है बिजनेस का Mr. Market से, वहां पे फिर इनएफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है और आप टाइम आर्बिट्राज करके सिंपली वहां पे खरीद के बैठ सकते हो उसको. Got it. One last question, Ishmohit. Maybe I'm not, I'm getting too inquisitive about it. For a person who does not have a regular stream of income, probably monthly or yearly, and who is working with a finite amount of money, and if he needs to enter into a stock, what is the best way for him to accumulate it, and how he should go about it? आई थिंक अभी आपने बोला कि फिक्स सम ऑफ मनी है, राइट? लाइक Yes, yes. agreed. So अगर fixed sum of money है, so I think there are like multiple ways. So एक ना conviction का level और एक कितना convinced हो गया हूँ मैं एक level है. So there have been times in personal journey as well that I've bought stocks when like Mr. Market started agreeing with me. Like I already had 2% allocation, but Mr. Market started agreeing with me. तो उसको हम कहते हैं pyramiding up करना start करें. You're averaging up your winners in that scenario. Then there have been times in my own journey where I was so convinced with the idea that I bought the entire thing in one go, and 9 months के लिए there was like at least 1 year के लिए the prices were flat, and because I was so convinced that I actually kept on buying more, right? तो अगेन बिजनेस टू बिजनेस और कन्विक्शन टू कन्विक्शन बहुत डिपेंडेंट आंसर है, बट आई ऑलवेज प्रेफर कि आप चंक्स में बाइंग करें तो हमेशा बेटर रहता है, क्योंकि चंक्स में ये समटाइम्स यू गेट बेटर प्राइसेस, एंड बिकॉज सी ऑन डे वन ऑफ योर रिसर्च यू कांट नो एवरीथिंग अबाउट अ बिजनेस, यू ओनली गेट टू नो अबाउट अ बिजनेस वंस यू आर इन्वेस्टेड. सो वंस एक बारी पैसा जा चुका है, उसके बाद असली जब वो नीचे उसकी वॉलेटिलिटी आती है, अगर वॉलेटिलिटी में डर गए तो मतलब कि यहाँ तो बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग में कोई कमी है, यहाँ तो कोई हेडविंड्स आ रही है जो आपको नहीं समझ पड़ रही इस टाइम पे. बट इफ यू आर टोटली कन्विंस्ड, तो मे बी चंक्स बाइंग विल हेल्प यू अ लॉट इफ यू आर अ डिसिप्लिन्ड गाय, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि फाइनाइट कैपिटल है, इन्वेस्टिंग ही करते हो, तो डिसिप्लिन तो होना बहुत जरूरी है इसमें. That's about it from my side. Thank you. Thanks, Vineet. And for the attendees, if you have any question, actually you have shared many. I have the list and even in the comments. But again, someone wants to come to the speaker and ask question, they can send in a request. We will approve some of the speakers. So next question is from Kamal Kocher. He's asking your view on textile sector, Ishmohit. So Prince, again, textile sector में I've studied a few companies. एक तो recycled stable polyester fiber वाली पड़ी है, and एक दूसरी आपकी garment manufacturer वाली पड़ी है. Those two companies are very, like especially the garment manufacturer has very high quality customers. But
See, again, see, अगर if I'm looking at the sector because we are studying like companies abroad, तो इन companies का at the end customer कौन है इन garment manufacturer इन सबका? Those are customers based out of US, क्योंकि UK के साथ अभी FTA नहीं है. तो यूएस में अगर आप रिटेल कंपनीज के रिजल्ट्स देखोगे तो नाइकी इज रिपोर्टिंग वेरी हाई इन्वेंट्री, राइट. लॉट ऑफ दीज रिटेलर्स आर रिपोर्टिंग वेरी वेरी हाई इन्वेंट्री. तो अभी टेक्सटाइल का ना एक बहुत फेवरेबल साइकिल जस्ट खत्म हुआ है 2-3 साल का. एंड अभी हो सकता है अगर ये थोड़ा सा स्लो डाउन इन स्पेंडिंग वेंडिंग हो तो नेक्स्ट 1.5 या 2 ईयर्स के लिए थोड़ा सा बैड साइकिल भी हो. बट पर्पस क्या है यार, मेरा होमवर्क डन है उस साइकिल में. क्या मेरे को पता है कि मेरे को कंपनी कौन सी आइडेंटिफाई करनी है, ऑलरेडी मेरे दिमाग में ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, राइट. तो मे बी इफ द हेडविंड स्टार्ट रिसीडिंग, बिकॉज इंटायर सेक्टर अगर आप ऑफलाइन या अगर आप यहाँ बात भी करोगे ना लोगों से टेक्सटाइल में, सब कह रहे हैं कि यार हमारा ना अभी ऑर्डर बहुत स्लो डाउन हो गया, माने कि बाहर इन्वेंट्री बहुत पाइल अप होने लग गई है. सो मे बी फॉर नेक्स्ट 1.5 or 2 years यू कीप ऑब्जर्विंग इट. हो सकता है कि 3-4 क्वार्टर में, क्योंकि अब सब रिसेशन बोल रहे हैं तो रिसेशन क्या होता नहीं आए, राइट. तो दैट इज समथिंग अगर मैं आज फ्रेशली देख रहा हूँ तो आई वोंट सॉर्ट ऑफ लाइक एंटर इट इन वन गो. बट if I'm very convinced on a business and if those headwinds persist and if I get a throwaway price, तो यहाँ पे क्या है कि मैं headwinds में जाके invest कर रहा हूँ and I'm assuming maybe 2-3 years down the line it turns into tailwinds, जो कभी ना कभी demand scenario तो cyclical ही रहता है. तो मे बी दैट इज वन थिंग दैट यू हैव टू बी हम्बल इनफ टू एडमिट कि नेक्स्ट 1-1.5 या 2 years का मेरे को नहीं पता, क्योंकि कंपनीज खुद ही कह रही है कि यार इन्वेंट्री इतनी हाई है, एकदम स्टॉकिंग अप हो रखी है, तो ऑर्डर्स नीचे जा रहे हैं. तो H2 में और ग्रोथ को ऑब्जर्व कीजिए, एज सिंपल एज दैट. सो दैट इज जस्ट माई व्यू ऑन टेक्सटाइल्स स्टॉक्स एट द मोमेंट एंड आई कुड बी 100% रॉन्ग एज वेल. Right. So there is one question from Pushpendu Goswami. So basically, he is asking in line of the tailwinds in infra sector. So he's asking, is action equipment construction can be played as a proxy theme to infra? See, Prince, I won't be able to answer like a buy or sell like question because वो थोड़ा हमारी डिस्कशन के बाहर है. वैसे Right, right. इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देख रहे हैं जस्ट बी अवेयर ऑफ द डाउन साइड कि यू नीड टू एक्चुअली हैव दोज टाइप ऑफ प्लेयर्स जहाँ पे इरिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग अ लॉट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉट, कि उनकी ऑर्डर बुक इतनी भरी हुई है कि अगले 4-5 साल का ग्रोथ तो ऐसे ही आने वाला है. एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ दोज बिजनेसेस. अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में ढूंढ रहे हैं तो प्रॉक्सीज में आपको ऐसे बहुत मिलेंगे जहाँ पे a company has 25,000 crores of order book, the market cap is 2,600 crores today. So you'll find such opportunities, but on a particular business, actually, so, I can't answer this question. Sorry. Right, right. Understandable. So Rajkumar, you can quickly unmute and ask your question. Yeah, thanks, Prince. Yeah, my question is related with paper and pulp industry. I understand it's a commodity business, but I've done bit of research understanding like in India still the per capita consumption is low, so, and few top stocks multiples are also less than 10 only. So how do we understand that part? Is it good to enter or yeah, that's it. Right. So actually, like I'll just actually have a very general answer to a lot of cyclical businesses because paper I consider it to be a cyclical industry. And if you just look at the very very long term like price to earnings multiple or price to sales multiple in this sector, they've always like sort of remained on the lower side. So this is so be very very sure कि whatever you're entering into कहीं उसके margins evaporate ना हो जाए. और ऐसी इन्वेस्टिंग में आपको ना पेपर के इन सब के प्राइसिंग आपको बहुत ट्रैक करनी पड़ेगी. तो फर्स्ट बी श्योर कि मेरे को ये चीज़ें ट्रैक करनी पड़ेंगी, क्यों? बिकॉज दीज आर द टाइप ऑफ स्टॉक्स जहाँ मैं बोलता हूँ नज़र हटी नहीं दुर्घटना घटी नहीं. बिकॉज इफ यू लुक एट द पैकेजिंग सेक्टर में भी यू विल फाइंड की कंपनीज 5 की पी पे है, कभी 3 की पी पे है, कभी 7 की पी पे है. बट बॉप और बोपेट वाले यहाँ सारे 52 वीक लो पे हैं. सिंपल रीजन बिकॉज बोपेट का और बॉप का सप्लाई, आई थिंक इट इज मेजरली टू डू विद बॉपेट और ईदर ऑफ देम. Over there, a lot of supply has come on stream in the world, due to which the earnings are getting destroyed at the moment. So maybe that 3-4 p is not the right metric in commodity businesses. So these businesses will have their own cycle, but you have to track demand and supply. For paper, I'm not tracking that level of demand and supply at the moment कि मैं हर रोज प्राइसिंग ट्रैक कर रोज की हर 1-2 महीने में. बिकॉज होता क्या कि एक महीने भी प्राइस गिरता है स्टॉक वैसे ही 30% डाउन हो जाता है. एंड देन यू कीप वंडरिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर क्या हुआ. तो दीज आर एक्चुअली वो क्लास ऑफ बिजनेस ही ऐसा कि वो एकदम डीपली सिक्लिकल है. तो प्लेट लाइक यू नो इट कि इट्स अ डीपली सिक्लिकल बिजनेस, आई नीड टू हैव अ ग्रिप ऑफ द साइकिल. तो
पेपर पे मेरा कोई ग्रिप ऑफ द साइकिल नहीं है, आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट. आपको ऑरम कैपिटल टाइप या फिर आपको उन सर से पूछना चाहिए, बिकॉज ही नोज अ लॉट ऑफ दीज साइकिल्स. बट पैकेजिंग टाइप का मैं आपको इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ बिकॉज दिस सिंगल डिजिट पी मल्टीपल इज विल फूल यू इन सच सेक्टर्स बेसिकली. Right. So there is one question from Abhishek Singh. He's asking which sectors to avoid in 2023 in line of maybe overheated valuation or maybe an opportunity cost point of view. सी अब अवॉइड वाले क्वेश्चन थोड़े कंट्रोवर्शियल ज्यादा हो जाते हैं बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि सेक्टर अभी हेडविंड में इतना है कि एक दो क्वार्टर में वैल्यूएशन ही इतनी सस्ती हो जाती है कि मैं अभी अवॉइड बोल दूंगा, शायद से हो सकता है मैं 2 क्वार्टर बाद जाके खुद ही खरीद रहा हूँ. तो वो थोड़ा सा बेसिकली वो आयरॉनिकल हो जाएगा सिनेरियो में बिकॉज दी फैक्ट्स कीप चेंजिंग. सो आई कांट हैव अ फिक्स माइंडसेट कि मैं किसको अवॉइड करूंगा या किसको प्ले करूंगा. बट सम ऑफ द ऑटो एंग्स, financials, industrials, capital goods, like some of these businesses look very very interesting. अगर आपको देखना है कुछ इन सेक्टर्स में आप जाके देख सकते हो, like building material, like these companies have been doing well consumption. Avoid वाले में I don't have a to avoid list specifically because facts can keep changing, right? But one sectoral index which I think can be like be very careful of at the moment is the micro cap companies which are there, because some of those companies are just going to 200p or 400p just on stories. Numbers aren't there. So 200-400 का पी कब जाता है जब फ्लोट कॉर्नरिंग हो रही होती है. सो एज अ रिटेल इन्वेस्टर बी वेरी वेरी केयरफुल बिकॉज 2 साल का साइकिल बहुत अच्छा गया माइक्रो कैप और लाइक एमएसएमईज इन बिजनेसेस के लिए, जो बेसिकली आपका वो जो स्मॉल एंड मीडियम जो आई थिंक आपका एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म या बीएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है. सो जस्ट बी अ बिट केयरफुल ओवर देयर बिकॉज स्टार्टिंग वैल्यूएशंस बहुत ओवर हीटेड हो चुके हैं. अगर अब आप किसी और का 2 साल का पुराना वाला विनर आके देखेंगे वहां पे आके, तो दिस विल नॉट बी द राइट टाइम एंड डेफिनेटली दैट इज एटलीस्ट टू मी आई विल पर्सनली बी अवॉइडिंग दैट. बाकी इफ यू थिंक दैट यू कैन फाइंड वैल्यू तो ग्रेट है, बट मेरे को तो एकदम अवॉइड लग रहा है वो, क्योंकि 600 की पी तो मतलब मजाक हो गया है ऐसे ऐसे सेक्टर, मतलब ऐसे सेक्टर के अंदर इस टाइम पे. All right. So Govind is asking any view on distillery space. Distillery is asking linked to this alcohol businesses. I am not sure, but maybe on that front only because he have mentioned only this part view on distilleries. Right, right. I think see, alcohol businesses generally all over the world they've created wealth, but these are slow creators of wealth because once brand is established, तो आपकी कंजम्पशन ओवरनाइट कंट्री की कभी भी 30% नहीं बढ़ेगी अल्कोहल की. इफ इट इज इंक्रीजिंग एट 30%, प्रॉब्ली समथिंग इज रॉन्ग विद द सोसाइटी, राइट? तो 30% कभी भी इन बिजनेसेस की कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी. सो दीज आर like very very like if you have a brand established over there, मैं अभी बल्क कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स की तरफ नहीं जा रहा because वहाँ पे उनकी cycles होंगी. Those are cyclical businesses and they should be played like a cycle. You'll hear stories that this company is becoming a branded company at top of the cycle, and at bottom of the cycle you'll say तो साला commodity था. But few companies, right, maybe 2-3 companies like a Radico or a United Spirits, these companies already have established brands. So but you need to have like return expectation mind में बना के रख लो कि हो सकता है बहुत epic ना बने because established brands and consumption इंडिया में अल्कोहल की 4-5% पे ग्रो करती है. मे बी देयर इज अ कंपनी दैट इज गेनिंग मार्केट शेयर, दैट इज ग्रोइंग वॉल्यूम्स एट हायर रेट, बट we have like stable expectations. But this is a very good space to be in because established brands over a period of time in this sector all over the world have created wealth. Right. Now, Chandan has a question how to early identify tailwind and headwind, whether it is structural or temporary, how to identify. सी अब हेडविंड्स का यार पहले हेडविंड्स का एग्जांपल देख लेते हैं एंड टेलविंड्स का तो टेलविंड्स का देख लेते हैं. सो हेडविंड्स में तो ये है कि सिंपली लाइक there will be few sectors where you'll be able to build a lot of good grasp on, like जैसे ये पैकेजिंग फिल्म्स वाला है, तो आई थिंक 6 to 9 months से managements have been saying that overcapacity and excess supply in the world will start coming. So that is something that was very very evident कि you have to avoid that sector at the moment. Then in terms of tailwinds, right, so जैसे अभी financials का example है, थोड़ा सा यार फंडामेंटल्स तो समझना चाहिए. मतलब इन माय ओपिनियन दैट जो भी टेक्निकल एनालिस्ट भी आए हैं आज कौन यहाँ पे, आपको भी ज़रूर समझना चाहिए बिकॉज
जैसे फाइनेंशियल्स आज अच्छा क्यों कर रहे हैं, उसके रीजंस हैं, क्योंकि आपका जीएनपीए ठीक हो गया, कॉस्ट टू इनकम जो एलिवेटेड थी पिछले 2 साल में, कुछ लोन तो बांटे नहीं लोगों को। एंड तीसरी चीज, आपका जो फ्रेश लेंडिंग है इस टाइम पे, जो न्यू क्रेडिट साइकिल है वो जस्ट स्टार्ट हुई है, तो वहाँ पे बहुत हेल्प हो जाती है अर्ली टेलविंड्स आइडेंटिफिकेशन में, बिकॉज आप 18 से मतलब 16-17 महीने पहले से, अगर अगेन इट माइट नॉट बी योर स्टाइल, बट एटलीस्ट 16-17 months ago you can pre-position yourself. So always remember this Benjamin Graham quotation जो सिक्योरिटी एनालिसिस की फर्स्ट पेज पे लिखी हुई है कि लाइक लाइक दैट जो भी आज गिर रहा है, बेसिकली उसका क्रक्स दे देता हूँ आपको, कि जो भी आज गिर रहा है, बेसिकली जो आज के विनर्स हैं, दे विल बी द लूजर्स ऑफ टुमारो, एंड द लूजर्स ऑफ टुमारो विल बी द विनर्स, लाइक एंड द लूजर्स ऑफ टुडे विल बी द विनर्स ऑफ टुमारो. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, दैट कोई भी सेक्टर अगर सेक्टोरल ब्रेकडाउन के थ्रू भी जाता है तो उसमें भी इवेंचुअली अपॉर्चुनिटी आ ही जाती है. So I think a cyclical investing framework or a deep value investing framework, that person will actually go into headwinds to look for companies which are giving positive commentary, which are saying that maybe after 2 quarters हमारी problem resolve हो जाएगी, and they are actually studying that company very very carefully. तो वहाँ पे अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेलविंड्स हो सकती है. एक तो फंडामेंटल रीजन वो है जिसके थ्रू आप कर सकते हो. सेकंड वे, द वे यू कैन डू इट is that you're simply using like the relative strength frameworks, and you're using market breadth indicators. I think SOIC से मैंने publish भी करा था पीछे, and you're looking at sectors where a lot of the businesses are moving together, right? कि a lot of businesses like so यहाँ पे क्या है कि if the stock prices they start doing well in a lot of such sectors, and you're finding that valuation comfort is still there, even there you can go and read the businesses कि इस sector में क्या हो रहा है ऐसा कि अभी जाके इनके prices में movement आ रही है, right? After multiple years of drawdown or sideways movement. So that is how you actually, like in 2020, so we did this simple relative strength framework, and we got a lot of these like companies like JB Chemicals, उस टाइम पे आपका लॉरस उस टाइम पे आ रहा था, सिंजीन भी उस टाइम पे आ रहा था. लॉट ऑफ दीज कंपनीज फिटेड दैट फ्रेमवर्क इन 2020. दीपक नाइट्राइट आ रहा था उस टाइम पे. लोग कहते हैं कि यार ये तो 20-30% भाग गया तो मतलब ऊपर हो गया. I think Deepak Nitrate, from there it went to become a five bagger, right? So no opportunity is ever missed. You just need to have a open mindset. जो स्पॉन्ज वाली बात थी कि आपको इस बायस में नहीं आना यार कि मैं तो ये सब करूंगा ही नहीं या ऐसा नहीं करूंगा. एट द एंड वी आर, all of us are students of the market, whether it's fundamentals or technicals. We are just probability driven investors. So this is another way to recognize those tailwinds. And sometimes those tailwinds last for almost a long period of time. Sometimes they also go away, but that is where you have to have your selling discipline in check, because as a retail investor biggest advantage क्या है? Flexibility of changing our minds, not the मैं भी ऐसे कहता हूँ कि एंकर बायस है कि आई एम अ लॉन्ग टर्म बाय एंड फॉरगेट इन्वेस्टर. लॉन्ग टर्म बाय एंड फॉरगेट में टेक अ 80% ड्रॉ डाउन एंड लेट्स सी इफ यू आर लॉन्ग टर्म बाय एंड फॉरगेट इन्वेस्टर और नॉट. आई एम टेलिंग यू दिस विल हैपन अगेन एंड अगेन. सो आप स्टॉक उठा लो, नाम चेंज कर लो, दिस विल हैपन ओवर अगेन. सो ईदर बी वेरी वेरी एक्टिव और बी समवन हु हैज अ वेरी लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन 10-15 years. जैसे अगर मैंने आज कोई कंपनी सिलेक्ट कर ली जो सिंथेटिक लेटेक्स बिजनेस में मोनोपोली बिजनेस है, तो वहां पे मेरा फिर थीसिस होना चाहिए यार 5 साल में दिस कंपनी विल इमर्ज टू बी द चैंपियन ऑफ दिस इंडस्ट्री फ्रॉम इंडिया, राइट? सो वहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आपको देखनी पड़ेगी. पर जहाँ पे अगर 2-3 year horizon है, इधर गो इनटू हेडविंड्स टू सिलेक्ट कंपनीज which are growing well and eventually उनका मल्टीपल बहुत सस्ता हो गया, or go into companies which have just started showing relative strength versus the market. These are ways to recognize early tailwind effects and also to identify yourself which type of investor you are. Right, Ishmohit. So we have Ankit. Ankit, you can unmute and ask. Hi, Happy New Year, everyone. And first of all, this is an appreciation for Ishmohit and Team SOIC. You are doing great work. Ishmohit, I have just one simple question. I think I've asked you offline as well, but I think this is an important topic which I think all your listeners would benefit out of. So my question is simple. I seen your recent video where you basically try to uh, frame how different types of businesses, cyclical, shallow cyclical, then there are compounders, and you give a lot of importance to valuation. So my question is that how easy or how difficult it is for you when you know that something like you mentioned about a synthetic latex business, and you know that 5 years, 7 years, 10 years, maybe
really good for something like that. But in the meantime, there will be periods when there will be very high valuation of the stock. So how do you look at that? That's my only question. Thank you, Ankit Bhai, for the question, and a happy new year to you and everyone at SmartSync as well. Hope Akhilesh is also doing well, and thank you so much for the question. And आपका content मतलब आपको एक चीज बता दूं तो आई थिंक 18-19 से ही मैं आपका ब्लॉग रीड करते आ रहा हूँ. मेरे को पता नहीं था किसका है स्मार्ट सिंह, बट 18-19 में आप तभी भी आप कॉन कॉल के नोट्स डालते थे एंड तभी भी हम बैठ के उसको पढ़ते थे. एंड व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट का भी आई यूज टू बी अ पार्ट ऑफ इट. तो इट वाज अ लाइक वंडरफुल थिंग कि कोई तो ऐसा कंटेंट बार बार दे रहा है. So that is like just something that I've never spoken to you about. So a very valid question that you had, Ankit bhai. So in such a business, yeah, see, when I know that there is dominance, absolute dominance, because there is no other company in India which is doing that, because लोग कहते हैं कि Reliance वो business कर रहा है, but Reliance नहीं कर रहा, दूसरे products के अंदर है. And if they keep launching new and new products, interim headwinds हैं, ठीक है, P multiple 30-35 times के आसपास चला हो गया. Right, so in such scenarios either you can rebalance the portfolio a bit. Maybe if it's a higher allocation you bring it down to a lower allocation. Maybe वहीं पे मतलब the idea of rebalancing works a lot. Or in a second scenario, if you think that next 5 to 7 years look really good for the business and एक B2C optionality भी इस time पे is growing at a fast pace, and even if that becomes 30-35% of the business, then the valuations of the business anyways will go through the roof, because we have seen what has happened with Astral कि वहाँ पे एक adhesive business का थोड़ा सा adhesive का नाम डाल के कहाँ valuation चला गया. So in such a scenario, either you just let it be, you don't play around with it until or unless it goes to some obscene 60-70 PE, right? So that is another way. So these are two ways to play it. Maybe I'll be like maybe in अभी होता तो शायद से मैं first वाले camp में होता कि मैं थोड़ा सा rebalance कर लेता. Like that is just my way of thinking. Thanks, Ishmohit, and all the best to you and your team at SOIC. And wonderful work you are doing for the community. So wish you all the very best. Thank you. Thank you, Thank Ankit you. bhai. Thank you, Ankit. So, Ishmohit, the next question is from Ambar, I guess. Okay. He is asking your view on green energy space and its beneficiaries. See, currently the demand growth is like off the roof for a lot of these new age technologies or new age green energy solutions which are coming up. But we have to, at the end of the day, as investors, recognize कि कहाँ पे वैल्यू क्रिएशन है, कहाँ पे वेल्थ क्रिएशन है. एंड स्टडिंग सम ऑफ द कंपनीज, चाइनीज सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स which listed in US will give you an idea that a lot of them actually went bust at the end of the day. Like a lot of those stocks didn't do very well. So you have to recognize कि कौन सा commodity space है, कहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी की वजह से बचे हुए थे बट अब नहीं बच पा रहे एंटी डंपिंग ड्यूटी की वजह से. देन यू हैव टू रिकग्नाइज कि कहाँ पे इनहेरेंट स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस है कि एंटी डंपिंग हो या ना हो. बिकॉज बाइंग बिजनेसेस थ्रू फंडामेंटल इन्वेस्टिंग and your thesis is कि anti dumping duty है, that is a thesis which is very very tricky because you're betting on one key variable, right? So now you've seen that solar glass में वो anti dumping duty हट गया, right? Even though capacities are being expanded, just speaking to some solar panel manufacturers, it's very evident कि कोई loyalty नहीं है, वो तो सब मंगा रहे हैं चाइना से, right? तो अब they have 3-4 brands they're buying and landed cost of imports is much cheaper than what the Indian guy is giving. So this is a very good space to be in because demand growth is non-linear. But just be careful that you are identifying a company which has inherent strength in its competitive advantage. Whether it's a shunt resistor company, maybe that company might have some year like one or like some years of down cycle, but एकदम dominance है यार, क्योंकि इंडिया में monopoly है वो business, right? So that is something that you can recognize. Fluoropolymers का जो usage है like hydrogen के अंदर electric vehicle में, semiconductor में, that is something that you can recognize कि जो green energy solution आ रहे हैं hydrogen and EV के, so that is a company that is doing very very well. Then फिर like the bromine company that is getting into this electrolyte business of electric vehicles, that business might do well if they're able to correct the cash conversion cycle, क्योंकि cash flow तो horrendous है उस business का इस time पे. So these are spaces, it's a good space, demand बहुत यहाँ पे सही आएगी, बट आपको ये देखना है कि सप्लाई साइड कहाँ पे कॉर्नर है और कहाँ पे एक बंदे ने मार्जिन आपने नॉन लीनियर करे हुए हैं. क्योंकि जब ये नई नई ऐसी स्पेसेस इमर्ज करती है तो बहुत बारी क्या होता है कि एक्चुअली दीज आर कमोडिटी बिजनेसेस, देयर इज नो स्पेशलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग अ सोलर पैनल. आप एक बारी सूरत हो क्या हो, यू फाइंड कि चप्पे चप्पे पे प्लांट लग गया है सोलर पैनल का. इट अ लॉट ऑफ इवन सोलर सेल्स का प्लांट आ रहा है इंडिया के अंदर.
So there is no speciality in that. So you have to find like over companies over here which have supply side, which have they've cornered the supply, right? कि वहाँ पे और कोई manufacturer नहीं है उसके अलावा. I think I just discussed about 3 companies. There are multiple, I think at least एक 10-15 companies का मैंने एक अपना watch list ही बना रखा है ग्रीन वाले ग्रीन एनर्जी में कौन सी जहाँ पे ऐसे थोड़ा सप्लाई साइड कॉर्नर है. So that is what you have to find at the end of the day. अगर वैसे खरीद लोगे तो चांस है कि लॉस ऑफ कैपिटल भी हो सकता है 1-2 साल में अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी रिमूव हो जाए अगर वहाँ पे और भी सप्लाई एक्सपेंशन हो जाए. सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर. Right, Ishmael. So Chandan has a question on CDMO. He's asking, does CDMO has have tailwinds for year 2023? And if a recession comes to US and Europe, what would be its impact on CDMO space? See, taking the second question first, जो बायोटेक की फंडिंग अगर रुकती है तो सीडीएमओ बिजनेसेस विल फेस द हीट विच आर मोर एक्सपोज टू बायोटेक्स. सो दैट इज दैट. बट फर्स्ट है कि अब सीडीएमओ आप कौन सा देख रहे हो, एग्रोकेमिकल या फार्मा. आई एम वेरी वेरी गंगो ऑन द एग्रोकेमिकल सीडीएमओज बिकॉज literally like those businesses have scaled beyond 2000 crores and scale effect being seen in the agchem cdmos is much higher than the pharma ones because simple reason है pharma में regulatory आपका बहुत है. फार्मा सीडीएमओज में भी अगर आप देख रहे हो सो गो फॉर द पेटेंटेड वंस नॉट द ऑफ पेटेंटेड वंस बिकॉज दोज आर सीएमओज एंड नॉट सीडीएमओज. तो सीएमओ वाले बिजनेस में फंसना ना, राइट, बिकॉज दैट इज क्योंकि बड़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इस टाइम पे सिर्फ इंडियन जेनेरिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए दे आर डूइंग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग and then they'll call themselves CDMOs. So those are companies which I'll typically avoid in the sector at the moment. But जो पेटेंटेड वाले हैं वहाँ पे बस वेटिंग गेम है यार. कभी ना कभी तो आपका ऑपरेटिंग लेवरेज या कभी ना कभी तो आपके मॉलिक्यूल्स एवरीथिंग कैन हिट. जस्ट लुक एट द वैल्यूएशन एंड जस्ट बी केयरफुल विद इट. सो दैट इज दैट. बट एक जो भी रिसेंटली विच हैज बीन सोल्ड टू एडवेंट, जस्ट बी केयरफुल ओवर देयर एज वेल बिकॉज वहाँ पे अभी 2 मॉलिक्यूल्स भी इनके 4 मॉलिक्यूल्स ही थे कमर्शियल में, 2 तो ऑफ पेटेंट जा रहे हैं. तो उस वाले में थोड़ा सा मतलब जस्ट थोड़ा सा बच के रहना. मतलब दिस इज नॉट अ फार्मा स्पेशली इज नॉट अ सेक्टर वेयर यू कैन just go and buy a basket of stocks because it could be the case कि entire basket performs horribly, right? So you have to be very very selective. But AgChem CDMO में जहाँ पे एक retail investor बहुत ज़्यादा diligence भी नहीं कर सकता, that is a much better space to be in according to my understanding of things. Like even talking to a lot of people within that industry कि क्या हो रहा है वहाँ पे इस time पे. All right. So Chanakya has 2-4 questions. So like I read it out in one go. So basically, is asking about right way to build circle of competence, and he's asking for a salaried person with monthly cash flows. What is the right way to build a small cap stock portfolio? And also, he's asking about like how many years in the past one should go for con calls and reading annual reports. So it's a good set of questions. I think the circle of competence वाला तो question यही है कि actually just do this like rule of thumbs कि if you can count the number of competitors in an industry which like exceeds your fingers on one hand, अगर आप 5 से ज़्यादा competitor count कर पा रहे हो तो initially उस sector को avoid कर दो. सिंपल रीजन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जहाँ पे नंबर ऑफ कंपेटिटर्स ज़्यादा हैं देन यू विल हैव टू डू अ लॉट मोर वर्क. The way industries where few companies are listed in that particular sector or there is like उस कंपनी का मार्जिन भी हाई प्रोफाइल है, सो दैट इज वेयर यू कैन गो एंड स्टडी. अब ये सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है अच्छा है बट थोड़ा सा ओवररेटेड भी. वी हैव टेकन इट टू अ एक्सट्रीम लेवल. रीजन बीइंग हम कहते हैं कि हमने बफेट से सीखा है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस का कॉन्सेप्ट. अग्रीड. अब बफेट हिमसेल्फ इज इन्वेस्टेड इन सो मेनी इंडस्ट्रीज, चाहे वो कारपेट मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो बिल्डिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो लाइक इवन जो आपका लुब्रिजॉल जो आपका ये CPVC रेजिन देता था पहले, तो लुब्रिजॉल में भी ही हैज बॉट द एंटायर कंपनी. तो ही इज इन्वेस्टेड इन almost like a plethora of sectors. If you look at even the private companies he owns, airline part manufacturer, industrials manufacturer, building material का उसने कितनी सारी कंपनीज उन्होंने ले रखी हैं. That is the idea at the end of the day. Look for simpler businesses. जितना simple business होएगा उतना आसान circle of competence build करना होएगा, right? So initially for a new investor I think businesses like consumption sector is a simple one to understand, right? इतना इसमें कुछ rocket science involved नहीं है. Niche and proxy businesses जहाँ पे एक ही 2 companies listed है, that is a very simple one to understand. जैसे aesthetics का business समझ लिया, right? एक ही listed company है, unlisted में 3 peers और है उसके.
DRHP पढ़ा तो समझ लिया. अब उसमें मतलब आई थिंक इवन 2 hours में बंदा समझ सकता है. वैल्यू पेकर का थ्रेड ही पढ़ लो यार पूरा, आपको एक आइडिया तो लग जाएगा बिजनेस में चलता क्या है. सो दैट इज द आइडिया कि यू लुक फॉर सच कंपनीज इंटेंशनली जहाँ पे सिंपल है यार, इतना कॉम्पिटिशन ही नहीं है. जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी में जाओगे वहाँ पे इट टेक्स अ नंबर ऑफ ईयर्स टू बिल्ड अ सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस ओवर देयर. एंड सेकेंडली चीज़ क्या है, इवन तो बिल्ड भी हो गया सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, फिर भी जरूरी नहीं है कि पैसा बनेगा ही बनेगा. हो सकता है कि सेक्टर ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि प्रमोटर्स को भी नहीं पता क्या ग्रोथ आ रही है बिजनेस में, राइट. सो ऐसा भी होता है. सो इंटेंशनली जस्ट अवॉइड देम, छोड़ ही दो यार उनको. अगर नए मतलब अभी अभी इन्वेस्टिंग में घुसे हो, केबल एंड वायर पढ़ लो यार, कुछ और पढ़ लो जहाँ पे सिंपल है, 3-4 ही लोग हैं. लाइक डोंट गो इनटू कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज वन वे टू डू इट. सेकंड थिंग इज कि यार जरूरी नहीं है कि वी हैव टू बिल्ड अ स्मॉल कैप पोर्टफोलियो विद आवर मंथली इनकम. फर्स्ट इज गेट योर लाइक योर वेल्थ क्रिएशन गोल्स राइट. पहले तो मैं सबको यही बोलता हूँ जो आते हैं इन्वेस्टिंग में नए नए, कि यार म्यूचुअल फंड या फिर निफ्टी के थ्रू ना अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी कर लो. गलती से अगर what if you are not good as an investor, what if you are actually not good as an investor, right? You don't have the EQ and you end up selling when even the price falls by 5-10%. तो फाइनेंशियल प्लान तो लाइफ में एक ही बार ही पूरे करने हैं. यू ओनली हैव टू गेट रिच वंस, राइट. कोई पुरस्कार तो मिलने नहीं वाला एक्टिव स्टॉक पिकिंग करके. सो फर्स्ट थिंग इज दैट part of your income should be used to maximize your financial plans and your financial goals. Then after that some part of the income should be used for the goals of wealth maximization, या फिर आपको अगर एक्चुअली में एक्टिव स्टॉक पिकिंग करनी है. फिर जब एक्टिव स्टॉक पिकिंग भी कर रहे हो, अगेंस्ट दैट पिक द निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एंड देन कीप कंपेयरिंग कि यार मैं इसको आउट परफॉर्म कर रहा हूँ या नहीं कर रहा. अगर मैं नहीं कर रहा उसको आउट परफॉर्म, तो मे बी इट्स नॉट मेंट फॉर अस ओवर 3-4 ईयर पीरियड ऑफ टाइम. जरूरी थोड़ी ना कि इसी से करके चीजें करनी है. अपने में इन्वेस्ट करके अपनी इनकम बढ़ा लेंगे, और चीज़ों में कर लेंगे. सपोज अगर मैं अपने में इन्वेस्ट करता हूँ सेम टाइम एंड अपनी इनकम बढ़ा लेता हूँ, राइट, तो आई कैन कीप पुटिंग इवन मोर एंड मोर मनी इनटू माय म्यूचुअल फंड्स एंड लाइक निफ्टी, राइट. आई डोंट हैव टू बी अ डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर. if you can't give time, that is also one way to look at it. You have an active portfolio, have a passive PF, but allocate more to passive PF and keep checking ki active wale mein whether I'm able to kill biases, whether I'm able to do well or not. That is, I think, the best way to go about it for a retail investor who's just sort of trying to basically do active investing or do it yourself investing. Because at least financial goals तो पूरे हो गया जिंदगी के. अगर फाइनेंशियल गोल्स ही नहीं पूरे हुए और हम अगले बफेट हम ही बनने चले, और पूरे रास्ते में अगर हम बफेट अगर अगले नहीं बन पाए, तो मतलब क्या है कि फाइनेंशियल गोल्स जिंदगी का मतलब यू ओनली हैव टू गेट रिच वंस, तो वी weren't able to get rich once, right? So that problem should never ever arise with you, in my opinion. Right, Ishmohit. So partly this question has already been answered, but again I read it out for you. This is from Anand Bhattacharya. He's asking, how do you see conviction in specialty chemicals and pharma CDMO at large being intact in terms of outsized returns in next say 3 to 5 years? See, I'm more and more oriented towards the like जैसे आपसे अभी I think I've already answered this question, that more and more oriented towards the businesses which are more towards like the unregulated spaces or the agrochemical CDMO basis. Pharma में yes, I'm very interested in one or two businesses, but until or unless I'm able to diligence the molecule level stuff and ये सारी चीजें, it becomes very difficult for an investor to guess कि किस molecule में कभी pricing erosion हो रहा है, कभी नहीं हो रहा. But CDMO में definitely pharma CDMO interests us. Maybe two businesses which are getting filtered. But agrochemical और like normal chemicals जहाँ पे margins आपकी बहुत ज़्यादा dance नहीं करते, like margins are like stable in nature. Those are the ones which interest us. I think in this I've already spoken about those, and you can just refer back to the recording. Right. So another question is from Rahul Sharma. He's when it comes to proxy in terms of carbon credit market, what comes to your mind? Definitely, what you're thinking that doesn't come to my mind. First thing I will say that because that company I've got so many questions. अब तो मतलब मतलब मेरे को नहीं पढ़ने का मन कर रहा अभी इस टाइम पे वो कंपनी, because like it's again out of the blue, if company starts going up on very low float and business model अभी भी like volatile है, so I'll be just a bit careful with that. तो अभी carbon credit के उसमें मतलब I don't personally find any opportunities, but see, be careful if you are studying that company as well. I won't like sort of name it over here.
Fair enough. Ishmoit, like technicals you have been learning lately. So, how has been your experience with the technicals and what all you see in technicals and how it has helped you with the buy and sell decisions per se? See, it's majorly helped me with two things. That is, exit criteria in highly valued stocks or when sectoral breakdowns are happening, and second is your this. Second is filtration of businesses. Entry है तो still I take on my fundamental basis. I won't like in my view I won't ever like buy a company just on the basis of charts. क्योंकि कभी उसमें कोई आईटी वाली कंपनी आ जाएगी और आईटी में वैसी बिजनेस में दिख रहा है हेडविंड्स है तो वो ट्रेडर तो एक दो दिन में निकल जाएगा. बट फंडामेंटल हेडविंड्स दिख रही हैं तो मतलब दैट विल जस्ट फूल विद यू लाइक इट विल जस्ट मेक यू अ फूल राइट. तो वो बेसिकली इट एंड्स अप बिकमिंग अ मिडिल फिंगर पैटर्न एट द एंड ऑफ द डे. तो आई नीड टू हैव फंडामेंटल बिलीफ ऑन व्हाट टू बाय and technicals will help me ki when basically the liquidity is also entering maybe I can increase my sizing at that point but like what to buy and like even buying points are decided by my fundamentals but filtration and exit criteria technicals like everyone should actually read this Stan Winstein's book Secrets for Profiting in Bull and Bear Markets and Mark Minervini's book as well Trading Like a Stock Market Wizard and this one William J. O'Neill. That is how to make money in stocks. Actually, all these three books are in my on my desk only right now. So these three books will help you a lot. And follow good technical handles like follow Kumar Saurabh, follow Shubham Mishra, follow right the chartist right. So they'll give you a very good information right कि क्या हो रहा है इसमें कैसा चल रहा है. But at the end form your own way because there's no one truth in investing because you're dealing with probabilities. तो फंडामेंटल्स मेरे लिए तो हैं यार व्हाट टू बाय में इन सब चीज़ों में. टेक्निकल्स मेरे लिए एग्जिट्स में आई थिंक दे कैन हेल्प यू अलॉट टू मैक्सिमाइजिंग योर गेन्स एंड टू लाइक अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क एज वेल. Right. So, when it comes to macros, how much weightage do you give to macros in your investing style? ओनली इंटरेस्ट रेट्स मैटर फॉर मी इन मैक्रोज बिकॉज मैं किसी कंट्री की जीडीपी तो डिसाइड नहीं कर सकता बट इंटरेस्ट रेट्स मैटर फॉर मी. देन कंपनी लेवल भी होता है जैसे देयर इज आई थिंक देयर इज अ मटेरियल साइंसेस कंपनी इन इंडिया ये जो कार्बोरंडम यूनिवर्सल करके है. सो अगेन दे हैव लाइक रशियन सब्सिडरीज एंड प्लांट्स एंड जर्मनी में भी लिया तो वहाँ पे फिर वो पावर कॉस्ट की वजह से बड़े प्रॉब्लम हो जाती है. तो दैट इज अ बिजनेस स्पेसिफिक थिंग अगेन बट इंटरेस्ट रेट्स डेफिनेटली मैटर फॉर मी बिकॉज यूएस में जिस स्पीड से अभी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तो एक टाइम पे क्या आएगा कि मे बी what because there's a war of money between like keeping it for spending or parking it in the bonds right. So if your like bond yields actually start go up there a lot and if interest rates go up there a lot there's a possibility that जो liquidity gush हमने all over the world देखा that liquidity gush already recede होना चालू हो गया. यूएस मार्केट्स में तो आप देख ही रहेंगे टेक स्टॉक्स एंड सारी चीज़ों का हाल क्या हुआ अभी. बट इंटरेस्ट रेट्स इफ समवन टेल्स मी सो दैट इज वन मैक्रो इंडिकेटर आई थिंक. मैं इस पर एक्चुअली वीडियो बना रहा हूँ अगले हफ्ते तो उसमें पूरा मैंने 40-50 मिनट्स का एक्सप्लेनेशन है कि वाई like why interest rates matter and how you can sort of go about it क्योंकि you can also end up investing in debt funds right when interest rates go to a very high level because if once the interest rates start getting cut from there then you end up making a lot of money just on the debt fund only. I think ये वाला साइकिल हमने 2020-21 में भी देखा था when people made a lot of money just by investing in debt funds and taking a call on interest rates. So that is also something that can be done. But there is a good book, Principle of Economics, which you can read to get more idea about it. Opportunities भी आती हैं. मेरे जो बाहर के दोस्त हैं, they have invested in like Tata Motors bond और Vedanta bond, which is like क्योंकि bond का जो maturity है वो अगले 4-5 महीने में ही है. So like the XIRR just on the coupon payments that they were making was somewhere close to 28-29%, right? And because foreigners are like throwing those companies in junk bond category, we know right कि Tata won't default, right? Or Vedanta won't default, right? So ऐसी भी opportunities आ जाती हैं if you keep tracking such things basically. Right, Ishmohit. So there is one question around like when initially the ticket size is small or maybe a salaried person has limited capital to deploy. So what do you think is the best strategy so as to build a good capital base so that one can go for say concentrated bet or so? See again, I'll just give this idea, Prince. Concentration तभी करना है
जब फुल्ली कन्विंस्ड हो, जब इंफॉर्मेशन पूरी एकदम प्योर है, जब नॉइज से साइड वाइड नहीं जाओगे, जब बिजनेस पे बेट सही है. हो सकता है कि बिजनेस पे बेट सही भी हो फिर भी खराब हो जाए. I'll suggest everyone should read the Zurich axioms because that will give you an idea कि कैसे होता है. But one thing that I've seen over the years, that small capital, if people who have made it large with small capital, most of them either were very very active or had very very concentrated portfolios. Because in a small capital base, अगर 20 अगर 40-50 stocks है, तो it's very difficult to make huge wealth, because 2% वाला stock अगर 4x भी हो जाता है तो portfolio पे सिर्फ 8% का impact है. Whereas if you have 25-30% in one business, again comes with a very strong caveat कि risky है, जब तक information सही नहीं है, जब तक valuation सही नहीं दी बिजनेस बारे में, तो दूसरे क्राइटेरिया में अगर 25% 4x हो रहा है, 5x हो रहा है, तो पोर्टफोलियो लेवल ही डबल हो जाते हैं उसमें. बट तभी करना है जब इंफॉर्मेशन एक्सेस पूरी है. अगर नहीं है, इतना आइडिया नहीं है इन्फॉर्मेशन का, तो देन डू नॉट डिस्ट्रॉय द आर्क, बिकॉज लाइक द आर्क विल ओनली सेव यू एट द टाइम ऑफ द फ्लड, राइट. कि धीरे धीरे भी कंपाउंड कर लेंगे तो कोई उसमें खामी नहीं है बेसिकली. मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि अगला अगला अचीवमेंट अवार्ड आपको ही थोड़ी ना मिलना है ये सारी चीजें करने का. अगर नहीं समझ आ रहा, अगर कुछ कॉन्सेंट्रेशन की बेट नहीं मिल रही, तो स्टे विद योर डाइवर्सिफाइड स्टाइल. आई हैव ऑल्सो सीन पीपल जो इनिशियली कॉन्सेंट्रेटेड थे, दे बिल्ड लार्ज पोर्टफोलियोज एंड उसके बाद वो डाइवर्सिफाइड हो गए, क्योंकि आइडिया इज टू ओनली गेट रिच वंस इन लाइफ, राइट. तो एक बार ही रिच हो गए लाइफ में, एक बड़ा रिस्क ले लिया, इट वर्कड फॉर देम and now they are diversified. But again, you have to be careful कि whether you're betting on the right thing or not. At the end, it all boils down to your conviction. But convexity की journey है इसमें, but इसमें failure भी हो सकता है, तो ये आपको दोनों चीजें याद रखनी पड़ेगी. So Prince, how many more questions do we have? Because my like Question. voice got I was refreshed. about to. Yeah, I was about to ask. Like, questions are many. How much more time we can have? Accordingly, we can take. Otherwise, we keep them for future reference, or I'll share offline with you. So Prince, let's just have last two questions because I had like a webinar in the morning, तो अभी तो एकदम बैंड बज गई है. Right. So one question is from Raj Hariram. He's asking, will you buy stocks based on anticipation of earnings growth if any order book announcement given, insider is buying, there is a management change, or how you go about entering such, what we say, announcements basically? So again, like in such scenarios, so if like insiders are buying in such a scenario and the business prospects look very good and I'm getting my starting multiple, the business is a dominant franchise in that sector. So yeah, अगर मेरा business का homework is done, and it's just a good indicator for me that the insiders are also like loading up on the business. अब कितना लोड अप करें ये भी देखना जरूरी है. कहीं कहीं तो सिर्फ 5-10 लाख रुपए का लेते हैं, जस्ट टू गेट एन आइडिया इफ कंपनी हैज 5-6 thousand crore market capitalization. So in those scenarios, it won't matter too much. So it won't be a signal. But if it is fitting my checklist criterias, then I won't sort of do analysis paralysis. I'll just go and buy the stock. I won't think too much about it. अगर मेरे checklist criterias meet हो रहे हैं, मेरा homework done है, मेरी research done है, लोग साफ हैं, accounting is clear, is clean in the business, I'll just go and buy the business. That's it. And I have my allocation rules. I just go by this 2-4-6-8 rule, which I have is 2% for the least convinced bets, 4% is for the bets I'm at least a bit convinced on, 6% on bets where I think the growth will be really really good, and 8% on bets where I think that the valuations are too cheap, the sector is coming in favor, and the growth can be really non-linear. So I have this 2-4-6-8 criteria which can help me save from the risk of ruin as well. That is how I basically think about my allocation of capital. Right. And the today's last question is the biases we have. So how you make the segregation, whether it's a conviction or we are liking the business out of our biases, we are biased about the business. How we can do away with the various kind of biases. See, these biases will always come. Echo chambers होंगे, anchor bias बनेगा. Everything will happen. I think having a structured process will help you to deal with these biases. And also, like before you decide to buy a stock, just for 10-15 minutes, just for 10 minutes, I think this is an activity which I've recently inculcated in my process. Just for 10-15 minutes, let's think the like criteria where I will go wrong in this business. कि इसमें क्या खराब हो सकता है.
कि कब मैं इस बिजनेस में खराब हो जाएगा मेरा सब कुछ, राइट? सो जस्ट फॉर 10-15 minutes a disaster check, and I'm not saying you do not invest, but a 10-15 minute disaster check can help you to deal with a lot of your biases. Because at the end, see, uh, no matter what we say, हम जितना रिसर्च करते हैं आइडिया पे, people start falling in love with an idea, but you have to be objective, because a stock will never love you back. Your wife and your kids will love you back, but a stock won't love you back, right? So you have to be very very objective with it. So ये जो love and hate tendency है ना, so this is talked about by Mr. Charlie Munger in his Poor Charlie's Almanac. This love and hate tendency, we have to keep it aside, right? Because when it comes to stocks, we have to change our minds as well. Remember, like recently, like Mr. Munger like bought Alibaba, and then he kept averaging down, and then he was out of the company in one go. Whereas he called Jack Ma to be a fantastic fantastic entrepreneur, and China to be the place to be in, right? So again, he changed his mind when he thought that the data isn't agreeing with him. Yes, he took a 40-50% loss, but at the end of the day, the idea is that biases ko side rakho, because stocks won't love you back. Be objective with it. I've sold some of my most beloved stocks when the facts changed, and I was getting a better opportunity. I actually literally don't have any love for securities. I have respect for entrepreneurs, but no love for stocks. Right? Just love for my own capital and my own capital appreciation. That is what you have to remember at the end of the day. Great, great. So we have come to an end of this session today. Thank you so much, Ishmohit, for your time. So, any concluding remarks before we depart? And ask you to commitment to have another round sometime in future. For the knowledge of our attendees, this session was initially planned for August, but again, Ishmohit has been so busy with his work at SOIC, so it materialized on this first day of this new year. So Ishmohit, quickly, can I ask like what new you are doing at SOIC and what we can expect in the year 2023 from you? See, currently I'm just working on a financial literacy course, and in that course we are trying to have each and every aspect of financial planning in place, whether it's from like how wills are made and why wills are important. Because abhi recently kya hua tha, right? So like the partner of mine at SOIC, so in his office, right in front of his office, there's a huge building which is lying completely empty, because after the father passed away, the like property was supposed to be given to the two kids, but they started fighting among themselves. And अब दोनों कहते हैं यार हम तो कुछ करेंगे ही नहीं इसका, मतलब लड़ाई इतनी हो गई है basically. So the idea of how wills are made, it's a very very important idea. Then this idea कि यार मतलब बहुत basic financial literacy से we are trying to build in next 2-3 months, like simple things like selecting a nominee for your demat. Now suppose if someone passes away and they haven't selected a nominee for the demat, it is a hassle in India to get a claim of those securities. That is the level of small things which matter a lot. कि टर्म इंश्योरेंस लेनी है तो कैसे लेनी है, राइट? व्हाट आर दी बेसिक चेकलिस्ट क्राइटेरियाज, व्हाई लाइक सो गोल्ड का वी हैव मेड अ क्लास, that history of gold we went till like 150-200 years to get an idea कि why people trust. Ishmohit, I cannot hear you. I lost you. Can you please check your connection? So for the knowledge of attendees, Ishmohit, his phone's battery died out, and so the phone got switched off, so he got dropped. But again, since we are near to the closing of this session, that is fine. So thank you so much, everyone, for coming today and enjoying this great session with Ishmohit. He had brought a revolution in teaching about equity markets. And for your knowledge, those who joined late, this session was recorded, and it will be available over my handle, as well as I'll be uploading this over my YouTube channel, so that anyone who want to revisit can refer to that. So with this, I thank you all from my side and Ishmohit's side. And of course, if you like the session, you can check out our handles, and as an appreciation, you can follow us, which gives us the necessary motivation so as to bring more learned people for the benefit of all. So I thank you all, and good night. Take care, and wish you a very happy new year once again.
to listen to Ishmohit or the same with the